हेलो। हेलो। आवाज हाँ नहीं आ रहा है स्कर्ट। क्या? स्कर्ट मिली? न, क्या? नहीं मिला। तुम्हें मिला? हाँ मिल गया। हाँ, कितने पे? टोटल आई थिंक टोटल 80 पुल्स के। हाँ। बट मुझे 10 पुल पे उसका वेपन भी मिल गया। अच्छा है। हाँ, मुझे कुछ नहीं मिला। अरे मैं बिल्ड करना इतना इरिटेटिंग लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर से गेंशिन में आया हूँ ना। हाँ। इतना इतना मतलब पुराना है ना ये गेम का, मतलब कुछ अपडेट कुछ हुआ ही नहीं है। इतना इरिटेटिंग लगता है बिल्ड करने में कैरेक्टर। अब क्या ही करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना कलेक्ट करने जाओ, कलेक्ट करने का मतलब मोबिलिटी भी उतना नहीं है। अरे आर्कन क्वेस्ट कौन सा वाला है वो नया? मुझे समझ में क्या नहीं आ रहा। क्या पता यार, मैं भी गेंशिन आज अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। मुझे डेंस स्लिप का क्वेस्ट करना है, इसलिए आया अरे हूँ। मैं बाद में करूंगा, कभी कहीं जा नहीं रहा है वो क्वेस्ट। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे मिलेगा अभी। स्टार रेल का आ गया लाइव स्ट्रीम आज। किसी भी गाचा गेम का भी लाइव स्ट्रीम देखता नहीं हूँ। कोड तो ले लो जाके। आज आया है ना? हाँ, 22 स्ट्रीम के बाद ले लूंगा वो कोड। हो गया लाइव स्ट्रीम खत्म। क्या अब इस बार वॉइस है क्या इंग्लिश में? नहीं किसका वॉइस? इंग्लिश में डांस लैब इनका सब इन सब का। पता नहीं, ट्रेलर में तो जापानीज में था। हाँ, ट्रेलर वो मैंने जो थोड़ा सा आई थिंक मैंने 10 सेकंड का इधर पे देखा था। 10 सेकंड करीब जो जापानीज में अरे था, बड़ा अभी इसलिए मैंने वो नहीं देखा। अबे पाइमोन का वॉइस एक्टर चेंज हो गया पता है? हाँ, पाइनमोन का मैंने सुना कि पाइनमोन का उनका वी रिकास्ट हुआ है। अभी नए वर्जन से उसका चेंज होगा, धीरे धीरे पुराने वाले चेंज करेंगे वो लोग। इस पे वो भी किनिच का भी तो चेंज हुआ है ना? किनीच का फिर से चेंज हुआ, वो जापानीज बंदा था वो चेंज हो गया क्या? नहीं, इंग्लिश में किनिच का चेंज हो गया। हाँ पता है, वो इंग्लिश वाला जापानीज बंदा ही था जो इंग्लिश में कर रहा था। अच्छा, मुझे ये नहीं हाँ पता था। देखो उसका, जाओ जाओ उसका उसका उसमें जाओ, कैरेक्टर आर्काइव्स में जाके देखो। एक सेकंड, अभी मुझे कौन है? लैंग्वेज देखने दो कौन सा है। इंग्लिश में हो? हाँ, ओके, इंग्लिश में हो। कनिच मेरे इस पे नहीं है। हेलो सनी। अबे कैरेक्टर आर्काइव्स में जाना। हेलो, योर मोड इज हियर। कैरेक्टर आर्काइव्स में जाओ। कनिच। एस्केप दबा के कैरेक्टर आर्काइव्स में जाओ। अच्छा, कंट्रोलर पे एस्केप दबाते हैं क्या? वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। इधर पे हाँ देख उसका क्या दिखा रहा है वॉइस एक्टर प्रोफाइल में, प्रोफाइल नीचे। वॉइस जेकब हाँ जेकब वही है, एंड ठीक है, चेंज नहीं अभी हुआ है। चेंज नहीं हुआ वही नहीं, है। बट मैं उसका वॉइस सुन रहा था तो एक इवेंट आया है, ठीक है। तो नेटलन पे मुझे वो मिला था, तो उधर पे मुझे नहीं उसका नहीं, वॉइस डिफरेंट पहला लगा। वाला पहला भी ये चेंज हो गया, अभी सेकंड भी ये चेंज नहीं हुआ। ये इस वाले पे वो ट्रैवलर टेल्स गिल्डेड चैप्टर। अब यार गेंशिन में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसको को मजाक नहीं कर रहा, बिल्ड करने का मन भी नहीं कर रहा इस वक्त तो। मुझे किनिच निकल गया अल्ट अकाउंट में, पीटी बीट उसका कर रहा उसका था। वेपन उसका वेपन सीरियसली? सुंदर दिखता था। बहुत। उसका वेपन सुंदर दिखता था इसलिए ले लिया। क्रिट वेपन है ना? एक फुल। हाँ क्रेडिट, अरे बहुत कुछ देता है बट वो सिर्फ सब के लिए। कोई और यूज नहीं कर पाएगा उसको। उसके लिए तुम्हें एनर्जी जीरो चाहिए रहता है। अबे यार, वॉइस नहीं है। क्या मजाक है ये। अरे बट वो तो स्ट्राइक खत्म हो गया पता है, Kojian-san, स्ट्राइक what are you सस्पेंड हो doing गया। here all by yourself? अरे इस बार हेलो। स्ट्राइक सस्पेंड हो गया। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ स्ट्राइक सस्पेंड हो गया है वॉइस एक्टर्स का। हाँ, वॉइस एक्टर का मैंने सुना है कि उनका वो स्ट्राइक, वो लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट अपडेट से आएगा। हाँ। हाँ, मैं बट इस वाले पे तो पाइमन का ओल्ड वॉइस ही है। नहीं नहीं नहीं, अभी नया वर्जन जो है एकदम नया क्वेस्ट है उसमें से चेंज हो गया। सुयसन, आई थिंक सुयसन, वेलकम द स्ट्रीम, कैसे हो? रे भाई, मैंने सर के विद सिग्नेचर निकाल ली। अरे अब सब मुझे मिल गया, सबको 10 फुल में मिल गया। टाइम पास किया। सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला।
Paimon didn't come here to train. Paimon's not looking to sign मेरे up पास for पता है any जितना diet पुल था plan or एग्जैक्टली उतना ही लगा bodybuilding मुझको class सब right मिलने में। now. अरे नहीं ये अरे All right, got it. But seriously, what do you take me for? Some coach from hell? I'd never force a नहीं student into something पाइमन they का didn't want नया to do. वॉइस है ये, मैंने नोटिस नया नहीं वॉइस किया। बोल रहा हूँ ना, नया वॉइस है बोल रहा अभी। हूँ ना, नया वॉइस है। अरे वॉल्यूम लगा, अच्छा वॉल्यूम रुक जा। मैं That being said, a little aerobic exercise would probably do you some good. यंसन You का could भी take वॉइस over my एक्टर patrol for आ a गया while. क्या? That would कर count. कर आगे कर, मुझे पैमन वॉइस सुनना है। Yeah. All jokes aside, you're right. I'm looking for some help. हेलो शेखर भाई, यू आर अलाइव। हाँ मैं जिंदा हूँ, एटलीस्ट मरने के कगार पे आ गया हूँ, so don't worry. The Collective of Plenty is holding a bodybuilding competition soon, and so many people have been busy squeezing in their last-minute workouts that we've run out of staff for patrols. Oh, so you've stepped in to cover their work. But don't you have a last-minute workout to do too? I'm good. बट For one सीरियसली thing, बता रहा हूँ, I मुझे believe peak conditioning पुराना can वाला only be achieved पाइमन through consistent training over a long time span. बहुत अच्छा Cramming in a था। workout at the last minute क्या? does next to पुराना वाला nothing for you. पाइमन का वॉइस वो थोड़ा सा बेटर लगता था। But more pertinently, नहीं well, as you can चैट probably imagine, पर हो रहे। I'm not अरे able हाँ to मैं चैट तो compete in पढ़ ही any रहा of हूँ। the most पुल सेव popular करते weight तो classes, and there's no मिलता real 40 competition in दिन my own ऑफलाइन weight class. रहने Yeah, नहीं, that makes sense. मैं 40 उससे दिन भी ज्यादा नहीं ऑफलाइन था, ठीक है। मैं लास्ट मावी का बैनर पे आया था, पुल करके निकल गया। क्योंकि तुमने Oh पे no! सेविंग करके रखा Don't था। look at Paimon like that. मैं We are not मैं the बहुत same weight बहुत class, बचा के and रखता no हूँ। way अरे is नहीं, Paimon मैं competing सिटलाली पे against you. 40 पुल्स किया, नहीं मिला, फिर मैं Traveler, छोड़ दिया। let's just help with the patrol, all right? Otherwise, तो Yansan's छोड़ gonna दो, make स्कर्ट Paimon पे enter पुल a करूंगा। bodybuilding competition. Perfect. I managed to get you on board मेरा with तो वो हुआ, just वो one रहता है ना look. तेरा, वो लास्ट में जब पिंक होता है, जब तू 3 बार लूज करता है 50 के हाँ बाद। हाँ मेरा वो वाला हुआ। हाँ Thank you both. It आई should be थिंक pretty मैं- मैंने भी easy. तो Just मैंने भी keep तो your बहुत eyes सारा peeled 50 and make डोज sure किया है। nothing strange is going on in the मैं area. किने चमावी का दोनों पे That'll हारा free था। me up to check the other अर्पण भाई ये section. आर्कन Let's क्वेस्ट meet है back at क्या? the settlement when या we're both done. ये डेंस लैब का क्वेस्ट है। Sure thing. Just leave it मुझे to वैसे us. पे पुल करने का मन कर रहा था, Experts उसका at बहुत क्यूट strolling and लगती है। patrolling. Don't you worry. वेरेसा वो इलेक्ट्रो वाला क्या? हाँ वो बहुत क्यूट लगती है। मैंने सुना है कि वो अच्छा डीपीएस है। एस्कॉफियर पे पुल करने का मन कर रहा था। अबे मैं किसी का भी मुझे नाम याद नहीं है, स्पॉइलर। अरे अरे! वो कुक वाली लड़की, मैंने कुक नहीं वाली, किया अभी तक। फाउंटेन की। तेरे पास एस्कॉफियर नहीं है? मेरे पास नेटलैंड का बस 2 ही कैरेक्टर है। मावी नहीं, का नेटलैंड सॉरी नहीं, 3 फाउंटेन की है, कैरेक्टर। वो फाउंटेन की है, वो फाउंटेन की है, क्रायो कैरेक्टर। नहीं, मैंने पता है 5.0 आने के बाद आई थिंक मेरे पास सिर्फ माविका, जिलोनिन एंड उसका नाम क्या है? अरे जो स्केट करती है, सिटलानी। मुआलानी। सिटलाली मुआलानी। वाला नहीं है। हाँ, ये 3 कैरेक्टर है। पास 5.0 सिटलानी से नहीं लेकर नहीं। अर्पण भाई वो अर्ली से Instead of भी confining बेटा themselves to डीपीएस the है heavens, वरेसा। मैं God मजाक should नहीं broaden their कर रहा हूँ, horizons in the सीरियसली बोल world रहा हूँ। below. गेंशिन का गेम प्ले एकदम अच्छा नहीं लगता। हाँ अभी मतलब वो वही बात है कि मतलब कोई गेम इतना खेलोगे ना तो अभी मजा इतना आता। खेलने की बात नहीं है, मैं वापस आके फ्रेश रहता है ना, वो भी नहीं है। मतलब वुथरिंग से इतना इंफीरियर है ना इसका कॉम्बैट। क्योंकि इसका कॉम्बैट पे और क्या ही करोगे और क्या भी कर सकता है, क्योंकि इसका पूरा जो कॉम्बैट है वो रिएक्शन पे बेस है ना। सिर्फ रिएक्शन का नहीं है, बट ठीक है, पर वुथरिंग इसका बेटर लगता है कॉम्बैट। हाँ क्योंकि उसमें वही है तुम ना, प्यारी डॉज उससे- करते हो वही। अरे उससे यहाँ पे आने में ना कॉम्बैट मजा नहीं आता। हाँ मैं एग्री करता हूँ, बट वेदरिंग मोबाइल पे यार उसका कॉम्बैट और बहुत घटिया है। एक और चीज भाई, स्कर्ट का पूरा कार्टेटिया का छापा है, देखा है तूने? मैंने मुझे स्कार का कुछ भी नहीं देखा मैंने, ना तो मैंने डेमो देखा ना तो ट्रेलर देखा, कुछ स्कर नहीं का देखा। छापा है, स्कर का डिजाइन तक। तू एक बार ट्रायल में जाके देख, स्कर का जब इसके में मोड पे रहता है ना, उसके टेल जैसा आ जाता है कपड़े का, ठीक है? Is it sleeping? पता नहीं, ठीक मैंने है। कुछ नहीं Doesn't किया look very उसका। hostile. तू वो देखना ना, वो पूरा उसका है भाई, Why कितना is it मतलब ये hiding उसका away यार। here?
देखना पड़ेगा, मैंने अभी तक उसका बोला ना, कुछ नहीं देखा। सब बोल रहे थे कि उसका ट्रेलर या फिर वो डेमो देखने के लिए, मैंने कुछ नहीं देखा। Huh? अरे You're gonna डेमो की बात नहीं wait? कर रहा मैं, ट्रायल की बात कर रहा हूँ। और Guess एक our और चीज है कि reputation in स्कर्फ का गेम Netland प्ले is थोड़ा more बुथेन वेव fearsome कैरेक्टर than we जैसा है, thought. तो उसे गेम Even प्ले ट्राई कर। villagers don't want to mess with us now. वो एक बुथेन वेव कैरेक्टर जैसा उसका You गेम mean प्ले है। that shiny thing? Huh. Must have dropped it as it ran off. Huh. Paimon bets that Hilichurl thought it was a priceless treasure. It was probably planning to hide it here for safekeeping. डेंसलेप का और आवाज we showed up. वॉइस है क्या What इसमें? Paimon अबे took a बट look. पता है सबसे घटिया पता है क्या किया? Hilichurls स्कर्फ aren't the को क्रायो बना brightest, के so घटिया किया। it might not be worth much, किस but तुम still. क्या दूसरा कोई एलिमेंट चाहते थे क्या? अरे नया एलिमेंट ऐड करना चाहिए था ना, जो लड़की अबिस से पावर यूज करती है, ठीक है, उसको तुम क्रायो कैसे बना दी? What is it? You look so serious all of a sudden. क्योंकि टेबैट में Isn't this टोटल just a regular old 7 key? एलिमेंट ही है ना। भाई ये The टेवार्ड style की नहीं is है। unusual, though. फिर भी Doesn't look टेबैट में तो Natlanese. ट्रैवल ये कर Where do रही ये you है think ना। it's ये from? टेवार्ड की नहीं है, मतलब हमें क्या मिलेगा? हमें बाद में मिलेगा डाइन स्लिप है, पायरो डाइन स्लिप मिलेगा हमको। What do you mean? What जो कैरेक्टर hibernation मुझे इतना is it? पता है अबिसल पावर से यूज मुझे करता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेंसलेप लेवल कैरेक्टर नहीं होने Wait. वाला। You mean the भाई spaceship? सुन The one that देख brought you पैसा to किसमें है, Teyvat? वो देख इनका पैसा किसमें है। भाई वो लोग सिनोरा को मार दिया, उसके बाद किसको इसको भी मार दिया? मार दिया। इसका नाम क्या है? अरे वो कैपेचिनो कैपिटानो। कैपेचिनो उसको भी मार दिया। अबे सब जिंदा होंगे, देखना ना, सब वापस आएंगे। So, नहीं, how did that key show सिनोरा up here? कैपेचिनो Are नहीं you आने sure you वाला। didn't just drop it? नहीं देख, तू देखते उन्होंने रहना। उन्होंने खुद भाई कंफर्म उनका कर दिया है। उनका भाई उनका पैसा है उसमें, जहाँ पे उनका पैसा है वो लोग करेंगे, ठीक आई है। डोंट Whoa. थिंक सो, Yeah. These क्योंकि look देखो identical. मैं कैपेचिनो का तो बोल नहीं सकता, So, बट if one of them's सिनोरा का मैं yours, 100% कैपिटानो गारंटी दूंगा कि उनका वो नहीं आने वाला, क्योंकि कैपिटानो क्योंकि अर्पण सिनोरा वार्न कर रहा ऑलरेडी हूँ, वार्न कर रहा हूँ। अर्पण मैं से वार्न कर रहा हूँ, तू ये बकवास करेगा ना, मैं ब्रेन रॉट बोलना शुरू कर दूंगा knew it. क्या तेरे स्ट्रीम पे। Oh, the तेरे keys स्ट्रीम to में a ब्रेन रॉट बोलना spaceship. शुरू कर दूंगा मैं। बोलो, Somehow ठीक है। that मुझे really क्या rams फर्क home the fact पड़ता है। that you really are an अरे actual हाँ, वंस ह्यूमन alien. खेल रहे हो या फिर Wait, नहीं? no. वंस ह्यूमन पे हम Descender. लोग कल अभी सर्वर But शिफ्ट anyway, करेंगे ना। now we know where it अच्छा, came from. The हाँ मैंने तो question डिलीट is, कर हाँ, दिया गेम। how did it get एंडलेस here? ड्रीम में जाएंगे हम लोग तो। The simplest explanation is that your sister भाई तो lost her डिलीट मत key कर, somewhere सुन। not far from here. मैं Then तेरा that बेस में आके villager सब ले लेता found it हूँ। and ducked into the nearest cave लेके to क्या hide it. करोगे? कल तो जाने वाले हो ना। If that's true, हाँ बट मैं ट्रांसफर कर it सकता हूँ तेरा means your कैलिब्रेशन उसको। sister was here recently. कैलिब्रेशन? हाँ तेरे कैलिब्रेशन नहीं है तेरे पास? मेरा कैलिब्रेशन बहुत घटिया है। चलता है, Yeah. Man, चलता है, मैं this लेके is भेज so दूंगा। crazy. We only agreed to help with the Ansan's patrol on a whim. And now we've made this bombshell discovery and found a huge lead on your sister. Should we keep following this trail while it's hot? मुझे Or और do you think we मतलब should उतना check ज्यादा back मजा in with नहीं the आ रहा है। Ansan? Ah, क्या there वंस you ह्यूमन are. में? Looks हाँ। like you went the extra mile today. अभी लोग खेल रहे Thanks for कहाँ हैं being ढंग so से? diligent. कोई भी ढंग से खेल तो नहीं है। Hey, Ansan, what's up? हाँ, Didn't क्योंकि think we'd वो see लोग you विंटर again till पे we headed back to the थोड़ा settlement. सा खेला था, इस टाइम पे नया था We तो were इस टाइम पे actually मजा आ just रहा about था। to go meet up with you. We've made a huge discovery today. I came here to let you know that you don't need to keep patrolling anymore. The bodybuilding competition देखते हैं has नया just been अबे नए cancelled, सिनेरियो का मैप so the वे usual ऑफ squad विंटर will और be उसे resuming कंबाइन their करता है normal मैंने बस duties. They'll be here to take over shortly. पता नहीं कब आएगा। Cancelled? Why? What happened? एंडलेस ड्रीम The Abyss order नया attacked. सर्वर कब हो रहा है ओपन? यही कल ही होगा। कल ही होगा? हाँ कल होगा। क्या करूँ? डाउनलोड करूँ क्या उसको? देख तेरे ऊपर है। मैं तो गेंशिन अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा गेंशिन में सीरियसली। गेंशिन बस I've मैं heard of क्वेस्ट the वगैरह Abyss करने order, आया हूँ। but this is the पता है first time नई I've कैरेक्टर known them मिली, to उसका take सिग्नेचर organized मिला तो action भी on मजा such a नहीं आ रहा। large scale. It's like they're preparing to go to war against our मेरा entire भी वो nation. आर्कॉन नेटल आर्कॉन को Little इसका फाइनल sect वाला versus the पार्ट entire नया nation बॉस at आया war? इसमें। How are they कौन expecting to सा? pull that वीकली off? बॉस? नया वीकली बॉस आया कुछ? वो नया वीकली बॉस Based on इससे everything पिछले we've वाले seen पैच from पे them आया so है, far, मैंने भी अभी the तक वो usually अनलॉक नहीं prefer to किया। act in the shadows. So, उसमें मावी का what's रिटर्न हुआ था different क्या about पिछले it बैच this में? time? What could they be after? आई थिंक हाँ, मावी का No रिटर्न clue. All we हुआ था know is that शायद they've से। attacked our tribe.
but that मुझे doesn't याद tell नहीं, us much. मुझे लगा स्कर्क के Our साथ आएगी नया defenses are बार। क्योंकि holding इससे पहले strong वाला so far. वर्जन मैंने So I'm खेला ही gonna नहीं head था to the ना। stadium of the Sacred मतलब वो Flame तुम and see what ड्रैगन की बात Malika बोल रहे हो knows. ना? If there's any information out there, हाँ, she's the one people इससे report to. पहले वाले Oh, वर्जन पे आया want to था। come with me? I'm sure एंड वो वाला everyone will वर्जन feel मैंने better खेला knowing ही that the नहीं। hero of Natlan is on the case. ये देखना Great. पड़ेगा। Then let's head over together. बस पक गया, मजा नहीं आ रहा है, मतलब क्वालिटी में पीछे गिर चुका है ये गेम। इसलिए तो दूसरा गेम है ना वो खेलो, जाके जेनलेस वगैरह खेलो। हाँ, जेनलेस का उसका बैनर है अभी भी, वो जो लड़की है इंक यूज करती है, किंग, जो आई ना इंक का चिड़िया यूज करती है। हाँ उसका बैनर है, मैंने ये एस्ट्रा पे पुल किया। कितना कितना उसका बैनर है, कितना टाइम है? याद नहीं, अभी भी आई थिंक 1 हफ्ते के करीब होगा शायद से। तब ठीक है। हाँ क्योंकि मैंने वो डीपीएस लेने से बेटर मैंने वो एस्ट्रा जाओ इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत अच्छा है। क्रिट डैमेज देता है, अटैक देता है, हील करता है। मैं देखता हूँ, मैंने जेनलेस उतना मन नहीं है, बट मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगता है। मैं वही बस अरे इस पे मतलब कैरेक्टर वगैरह बिल्ड करने पे भी इस पे भी मेरा जान निकल रहा है। तेरे वजह से मुझे मिया भी नहीं मिली, ठीक है? मियाँ भी कौन है? हाँ, मेरे वजह से जेनलेस में क्यों? वो। हाँ, मैंने क्या तू किया? मुझे बोला ही नहीं मिया भी का बैनर आ रहा है। मैं उस टाइम पे खुद उतना नहीं खेलता था, मैं किसको बोलूं? हाँ, बस तेरे पास तो है ना मिया भी। हाँ मेरे पास है, मेरे पास उसका हाँ सिग्नेचर भी है। हाँ, बस बस actually, तेरे वजह से नहीं मिला मुझको। हेलो ट्राम, कैसे हो? मैं वैसे कभी किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि वो ये बैनर है वो बैनर है, जाके ये हाँ पुल हाँ जाके ये हाँ पुल करो वो पुल करो, हाँ मैं हाँ, किसी को भी मुझको नहीं भी है, बोलता। बस बस बस। बहुत हो गया, ये कब से मिया भी चाहिए थी। आई थिंक मियाबी का उसके बाद भी रीरन आया था शायद से, पता नहीं कब अगर नहीं, आया रिजल्ट होगा। नहीं आया उसका, नहीं आया। मैं उसका चेक किया, तुझे लग रहा है मैं चेक नहीं कर रहा हूँ? मैं अब उसके मजाक नहीं बाद कर सुन रहा, सुनने मियाबी को बहुत अच्छा डीपीएस है। जब Oh? से मैं अरे मुझे डीपीएस की नहीं चाहिए, Great वो timing, बहुत Eon अच्छी लगी, son. कैरेक्टर I बहुत was अच्छे just लगते हैं about to उसके। सिर्फ send someone कैरेक्टर for नहीं, you. उसका प्ले स्टाइल भी And बहुत it's अच्छा good है। to see the travelers with you. एंड मतलब प्ले स्टाइल भी How are things बहुत इजी टू looking? What's the मतलब latest प्ले word है। from the प्लस अरे वो भी messengers? नहीं है ना, वो भी है राइडन की वॉइस The एक्ट्रेस है। Abyss Order has been spotted near several tribes at the same time. Clearly, this is a coordinated उसकी जो strike. वॉइस है, Also, their तू देखा नहीं numbers है are मिया much पे higher कितनी than प्यारी expected. लगती है वो। Their मतलब organization उसका वो appears to have देख, ठीक है, grown इतनी पावरफुल considerably. स्पोर्ट्समैन है, But ठीक है, because तभी they're भी उसको usually वो so डेस्क पे secretive, लिखने this में is the बॉक्स के first ऊपर we're चढ़ना learning पड़ता अरे है। about. हाँ, ये तुमने It उसका sounds क्वेश्चन like नहीं they're किया ना? throwing मैंने everything they have गेम at इस बार us. अपडेट किया, What are they मैंने इसका trying to क्वेश्चन करने achieve? गया, सीरियसली बता रहा हूँ, इस That's वाला what जो I'd like to know as स्टार्टिंग में well. ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, Historically, Natlan has not बहुत been a ओपी क्वेश्चन hotbed है of वो वाला। Abyss Order जेनलेस, activity. हाँ जेनलेस में, And we have no particular quarrel with them. मतलब अबे पूरा जेनलेस में फाइटिंग से क्वेस्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अबे Revenge, जेनलेस में perhaps? क्वेस्ट करूंगा, बट Would they दिक्कत है want to कि get क्वेस्ट back में at सिर्फ us for जिगल a दिखता recent है। victory over the Abyss? जेनलेस का क्वेस्ट मतलब Seems unlikely. उतना But मतलब वो then नहीं है, again, बस उनका कट सीन तो I'm अच्छा unwilling है, to anything ऐसा past the बोलूंगा मैं। Abyss Order. वही It's तो too बोल रहा हूँ ना, early to वो say सब में anything सिर्फ जिगल definite. दिखता है। For the time being, we should ट्रम्प के continue पास है क्या monitoring मियाँ the भी? situation. ट्रम्प? How are the battles going? Not too many casualties, hopefully. Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our brave warriors have just emerged अरे victorious from an हाँ, all-out अभी fight तो against the वॉइस Abyss एक्टर का itself. जो है वो उनका वो स्ट्राइक उन्होंने उठा लिया है, तो अभी हुआ क्या है, लगता है जस्ट हुआ है। पूरा जितने भी कैरेक्टर का वो जो वॉइस नहीं है सब सब तो कास्ट होगा ना? हाँ, सबका नहीं, सबका देखा जाएगा, या तो उनको देख जिनको निकाल दिया है, ठीक है, वो लोग भीख मांग के आए तो शायद वापस ले ले, क्योंकि देख उनका बचेगा, क्योंकि अभी लोग नया कास्ट करेंगे ना, उनको सब पुराने वाले पुराने वॉइसेस को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि और हाँ जिनका हमने वो नहीं बोल रहा हूँ, जिनका वो जो आर्कन क्वेस्ट में खास करके जिनका वो वॉइस नहीं है, ठीक है, वो तो हाँ, वो वो सब आएगा, वो सब करेंगे वो लोग फिर से। क्योंकि करना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, Yep. We have a whole nation's worth of देख इस बार seasoned मजाक नहीं कर रहा, veterans fighting for us. इस बार उनको क्या कहते हैं, कम पैसा मिलेगा इस बार, जब वापस आएंगे अगर वो लोग। अबे फर्स्ट डिसेंडेंट का क्या अपडेट आया है? क्योंकि क्योंकि तुझे लग रहा है होयो का नुकसान नहीं हुआ है, वो वॉइस नहीं था इसलिए। नुकसान तो हुआ है। हाँ,
Compared लोग to the अभी फुल true तो पे नहीं Abyss, करने वाले the उनको। Abyss Order poses a far smaller threat. They cannot endlessly replenish their देखो forces होयो for उनको starters. होयो एक मतलब वो देता है, कंपनी को दे देता है। आपका जो वॉइस जो कंपनी है वो जो वॉइस एक्टर है उनको हायर करती है बस। होयो However, के this हाथ is में still नहीं a है ना war, वो कि so we उसमें must कौन give it our वॉइस all and do our देगा utmost to कौन नहीं minimize देगा। casualties. The tribes are वो जो organizing their रिक्वेस्ट कर defenses सकता as है we ना, क्योंकि speak. फिर उनका काम बढ़ेगा। अदरवाइज वो रिक्वेस्ट तो Traveler, करेगा। this is one war that Natlan can handle on its own. If you कर wish to सकता stay है out of होयो it, डायरेक्टली you'll be safe वॉइस here at the एक्टर का stadium वो with भी me. ले सकता है, बट अपने खुद का कंट्री का ले सकता है। दूसरे कंट्री का आई थिंक उनको वही करना पड़ेगा, दूसरे कंट्री में हाँ, जाके। पर उनके खुद के कंट्री में कितने लोगों को अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है वो देखना। हाँ वही तो। देखो चाइनीज में वो लोग चाइनीज का खुद का वो हैंडल करता होगा। अच्छा अच्छा। वो तो Oh? ऑफकोर्स करते हैं। In what way? एंड तुम्हें स्कारमूस का चाइनीज वॉइस एक्टर का पता है? किसका? स्कारमूस का चाइनीज वॉइस एक्टर, उसका क्या? उसका वॉइस इतना ओपी है ना। अरे तुझे अच्छा वॉइस एक्टर से तू एग्लेया का वॉइस एक्टर देखा तो एग्लेया। Yep, that's how it is. अगले चाइनीज में क्या? नहीं नहीं, चाइनीज में नहीं, इंग्लिश में जो मैं चाइनीज की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो समझ फिश में आया, करी, but मैं वॉइस एक्टिंग, अगर तू टैलेंट की बात फिश करो करी ना। कुक करो भाई। किस लिए फिश करी? नहीं, अरे तुम न्यू वाला क्वेस्ट कर रहे हो, ये अपने न्यू वाला क्वेस्ट कर रहा है। इसका राइज ये भाई मैं विजय अरे कैसे हो? मैं वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल उसका रहा हूँ इसके जो स्कारमूस का जो ओएसटी है ना, उस पे उसका खुद का जो चाइनीज जो वॉइस एक्टर है ना, उसका आवाज है। अरे नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुझे वॉइस एक्टर्स का टैलेंट देखना है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो होगा शहर में जो एग्लेया है ना, I एग्लेया see. हाँ एग्लेया, My goodness. हाँ, That is उसका वॉइस सुना है तो। very personal हाँ indeed. मैंने क्वेस्ट तो किया है, मैंने सुना तो है। हाँ हाँ, तो तुझे पता है वो किस और का और किसका वॉइस एक्टिंग की है उसी गेम में। किसका? मीड है ये वाला क्वेस्ट, सीरियसली? मैंने कंप्लीट कर दिया, वो ये क्वेस्ट बहुत अच्छा है। वो गुनाइफन का वॉइस एक्टिंग की है ऊपर से। कैली करीबट का वाला अच्छा है इससे। वो वाला क्वेस्ट बहुत छोटा था, पता है ना, वो सुमेरु का वो तो लाल। हो गया बहुत, वो तो बहुत हाँ पहले हो गया। बहुत छोटा था वो वाला क्वेस्ट। एंड हमें उधर पे उतना ज्यादा कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मिला नहीं। अरे वो बोल रहा सुन, वो देखा तो क्या कहता है वो गुनाइफन का वॉइस की है वो। गुनेशन और वो कौन है? अरे मैं अरे कैरेक्टर का मुझे इतना नाम याद नहीं रहता। अरे गुनाइफन, वो जो स्ट्रीट परफॉर्मर जो क्या कहते हैं, सुशांक के छाती पे स्टोन फोड़ती है हथौड़े से, वो जो गोस्ट वाला था ना, मिशन गोस्ट हंटिंग वाला। मुझे याद नहीं आ रहा है सीरियसली बता। अच्छा तुझे एक और बताता हूँ। तू कार्टिथिया खेला है राइट? कार्टिथिया काटते वो कौन है? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नाम ही याद है नहीं। वुथरिंग वेज में जिसको तो पुल किया था, वो एरो कैरेक्टर नहीं वाली, जो हाँ अल्टीमेट बड़ी लड़की बन जाती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उन दोनों का वॉइस सुना है, तो बट छोटी वाली का बड़ी वाली यस, का। हाँ मीड है थोड़ा सा। छोटी मैंने वाली काइडो और का बड़ी वाली का आवाज वॉइस सुना है एक्टिंग तो। किया है वो पे। काइडो का? नहीं, अबे काइडो का वदरिंग वॉइस पे कहाँ पे आ गया? अबे सुन ना, तू उसका किया है वो क्या कहते हैं, कार्टिथिया का सुना है ना, बच्ची कार्टिथिया और बड़ी कार्टिथिया हम्म। का वॉइस सुना है तो। हाँ सुना है। हाँ दोनों सेम वॉइस एक्टर है। हाँ उसमें देखो वो वॉइस चेंज कर सकते हैं उसमें, वो उसमें क्या बड़ी बात है? अरे एकदम अलग लगता है उसमें। और तू उसका देख, बस अगलाया और गुनाइफन का डिफरेंस देख, पूरा मतलब बदल गया, इन आदमी बदल गया वैसा लग रहा है। मैं वैसे वॉइस एक्टर की बात करूँ ना, तो मुझे एक सोलो लेवलिंग का जो एक वॉइस ट्रांजैक्शन रहता है ना, वो बहुत वो भी था। गेम की बात कर रहा है क्या? नहीं नहीं, सोलो लेवलिंग की बात कर रहा हूँ। सोलो लेवलिंग हाँ एनीमे पे जो एक वॉइस ट्रांजैक्शन तुम्हें याद है ना, जब वो स्नेक से फाइट करती है। अच्छा वो देख, अच्छा वो वॉइस एक्टिंग जब वो हाँ बोलता है हाँ वो पावर वाला। हाँ, इस पे जब वो फर्स्ट डंजन पे जाता है स्नेक बॉस हाँ फाइट पे, वो उसका सुना वॉइस है मैंने। ट्रांजैक्शन
हाँ वो अपना वीकनेस के बारे में वो सब बोलते हैं, वो वाला बोल रहा है ना। उसका वॉइस एक्टर बहुत अच्छा है। मैं वो एनिमे नहीं देखा वो बाई सोलो लेवलिंग। तुमने मानवा पढ़ा है ना? देख मैं मानवा वहां तक पड़ा हूँ जहाँ पे वो जायंट वाला मोनार्क आता है, क्योंकि देख मेरा एक रूल है, ठीक है, अगर मैं मानवा में देखता हूँ किसी दूसरे कंट्री का तुम लोग जबरदस्ती बेइज्जती कर रहे हो, मैं उधर ही बंद कर देता हूँ। राइस माइनोनो अरे नहीं, राइस वाला वो नहीं। अरे जब अपना फर्स्ट डंजन पे जाता है एंड जब फर्स्ट डंजन पे अपना इससे स्नेक से फाइट करता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, वो वाला ट्रांजैक्शन मैं बहुत ओपी है। अरे तू ठीक है, वो मेरे बस दिक्कत है कि कोई मानवा ना बड़ा बकवास का वो तुमने जापान द हेट जो होता है ना। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड पढ़ा है ना? हाँ वो पढ़ा है वो भी, अबे वो स्कूल वाले आग के बाद बोरिंग हो गया। ओके, मैं तुम्हें एक उतना उतना ही तो अच्छा था ना। तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ, उतना तुम्हारे लिए तो अच्छा था ना इसका स्टोरी। देख बिगिनिंग आफ्टर द एंड का स्टार्टिंग में स्टोरी इतना सुंदर था, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग उसका में था ना उसका स्टोरी। एनिमे ने क्या किया पता है? हाँ पता है, वो बिगाड़ दिया पूरा। आई थिंक पता है, तूने क्या। तुमने उसका ट्रेनिंग वगैरह नहीं पढ़ा होगा ना? अरे मैं उसका वो, और उसका तो मानवा खत्म हो गया, कंप्लीट नहीं है उसका मानवा। नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मानवा मानवा एनिमे नहीं। ओ हाँ, मुझे अच्छा लगा था। किसकी बात कर रहे हो विजय, सोलो लेवलिंग की या फिर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड तुम्हें अच्छा लगा? किसका स्नेक अर्पण भाई? इसका सोलो लेवलिंग का स्नेक। If you don't mind me asking, do you have any idea what her goal could be? Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. अरे हेलो, मिल आवाज आ रहा जाएगा, है? हाँ आ रहा है। Ever since Paimon met the Traveler, he's been trying to track his sister down and get some answers. But she's been avoiding him. सनी, हाँ उसको तो सब कुछ मिल गया, उसको कैरेक्टर वेपन सब कुछ मिल गया है, वो तो खुश है I अभी। see. So you two have fallen out. मुझे तो कुछ खुशी भी नहीं हुई A मिलके। pretty common occurrence between siblings. मुझे भी कोई गेम में अभी 5 स्टार मिलने पे मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं हुआ है। अरे होता है, मुझे होंका स्टार है वो सब में होता है, इसमें नहीं होता। मुझे किसी में भी उतना मतलब वो Well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher हाँ, where मुझे these two मिला are involved. 67 पीटी पे। ओ बट अच्छा नहीं। अच्छा नहीं मिला? अबे क्या अच्छा नहीं मिला? कैरेक्टर मिला है, और क्या चाहिए? अच्छा नहीं मिला? उसको वेपन भी चाहिए शायद। They certainly are. Although पता है, somehow it मेरी doesn't मॉबी का भी बिल्ड surprise me नहीं that a है, spat मैं between the कुछ बिल्ड नहीं Traveler कर and रहा, मैं बस Twin पुल could करके affect the निकल fate of जाता the हूँ। entire world. माँ अभी का भी मैंने भी उतना वो फार्म नहीं किया, मैंने थोड़ा सा फार्म किया था बस वही। His as is finally his friend. Just so I'm clear, you're still on Natlan's side, and you have no idea what your फर्क sibling ही is नहीं पड़ after. रहा गेंशिन में Is क्या that होगा। अब right? देखते हैं, नया रीजन आएगा तभी खेलूंगा शायद। नया रीजन अभी नहीं आने वाला। Well, that's a हाँ relief. पता है, टाइम When you लगेगा, first समझ में आ mentioned रहा your sibling, I was I don't know worried कि you वो were लोग about to ऐसा be क्यों कर thrust रहा है। into an impossible मतलब है। वो position. लोग करेंगे ना उनका। और कितना ये लोग खींचेगा इसको, हाँ वही तो, वो लोग खींचेंगे ना उसको। क्योंकि उन्होंने पता है इनका स्टोरी के लिए उन्होंने टोटल 5 साल का टाइम दिया था। अरे बात वो नहीं है ना, बात ये भी है कि देख अभी अभी जो लास्ट वाला रीजन है ना, उसमें अरे कितने सारे अगर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आएंगे। अगर तुम्हें 350 लॉस्ट इन रो तब तुम्हें कैसा लगेगा? वो गारंटीड हो जाता है, उसके बाद तीन थर्ड 50 तो नहीं हारेगा। थर्ड पे तुझे गारंटीड वो तो मिलेगा। मैं भी हार चुका हूँ, मुझे नहीं क्या नहीं, बोल रहा हूँ। थर्ड 50 में तुझे गारंटीड मिल जाएगा। Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the तुझे Masters of the तू Night 2 बार Wind. हार गया ना 50-50। और मैं तो तू इस पे मैंने जिलालिन पूर्ण किया, मेरा गारंटी था, मावी का भी मेरा गारंटी था। If you don't plan on staying here with तेरा me, भी इसका I'd गारंटीड है recommend फिर। going there to lend them a हेलो, hand. तेरा पे इसका अगर तू मतलब वो हारा है ना पिछले 2 50-50, अगर तू हारा है तो अभी तेरा गारंटीड है I'll इसका। join you.
Right now, the Collective of Plenty isn't देखना facing a पड़ेगा। serious threat, so we मेरा should भी वही हुआ support था, the मैं other tribes. किनीच और माविका पे अभी इस 50-50 पे 100% किया था। रेडिश क्या क्या रेडिन से है ना, क्या आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आया ठीक है। Many thanks, you two. Anything you need, send word to me right away. चल मैं अभी निकलता हूँ। हिया अरे मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे स्कार्क मिले या फिर ना मिले उतना मतलब वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो वो भी अच्छा है। मैं बस आया हूँ कि मुझे आर कॉन्क्वेस्ट करना है डेंस लैब का, बस इसलिए आया हूँ मैं। मेरे मुंह के सामने मेरा एक चेस्ट दिख रहा है। आई मीन कैप्चरिंग रेडियंस है ना, एंड ये वाला 100% है। हाँ किसका, तुम्हारा? Look, it's Eulalie. Huh, I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Mawika told us to come here. Oh, the situation must be pretty dire if it's managed to get Eulalie out of the house. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. अर्पण भाई स्कार का They just think we're pushovers or something. क्या थीम बोलो ना, क्या थीम, क्या क्या बोलूं मैं स्कार का? The more I thought about it, the angrier I got. I couldn't exactly concentrate on my novel after that, so... well, here I am. So, that's how they earned the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who the real villains are. Hey! She's saying your sister has poor taste. Wait, what? Are you saying his sister is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad, but maybe I went too far. Hey, let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good. A much-needed chance to vent my frustration. Not a moment too soon. Things were getting awkward there. Luckily, I'll never have to find out just how badly the rest of that conversation was gonna go. You didn't have to say that last part out loud, Eulalie. Anyway, let's get him! अबे मुझे मेरा कैरेक्टर यूज करने देते सालो। The wind knows me. Light it up! Bring it! Hear the echoes of the valley! As one with wind and cloud. Light of the blazing sun!
much better. That's more like it. Oh, impressive work, Granny Eatsley. If I'd known अबे you इधर were पे on मुझे the case सिलाली already, मिल गया था, मैं I इसको might have स्पाइरल में लेके जा reconsidered सकता था whether your क्या? tribe really needed reinforcements. If anyone should be reconsidering, it's the Abyss Order. They picked the wrong target this time. Experience says that if we head in the direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, was there a battle here just now? Need any help? Nope. The warriors from the Masters of the Nightwind are here! The battle against the Abyss is still fresh on our minds, so everyone's used to working together. Well, morale's high and everyone's here. Let's go take down that stronghold! I'm coming. डेंस लेप तो किधर है? Never What? again. Forward! Crush them! अबे कितना हील कर रहा है ये? What is that thing? It's like it's draining the strength right from my body. Find a way to destroy it! Rev the engine! Is this our अबे कितना डैमेज कर दिए ये लोग? Into the wind. The Abyss Order's resistance is faltering. Now's our chance! Not you two! Time to end them! Get to work! Clouds high. The birds come. Let the mountain's veins boil! Everybody stand back! Lolene! East Papa! Get him! Fulfill our pact! Wind strike. As one with wind and cloud. Warriors! Attack! After them! कितना डैमेज कर रहा था वो ये लोग? Letting brave names echo! One with nature. Going in! You must be the boss here. Time to show you what happens when you mess with the Masters of the Nightwind! Resist the abyss will pay the price! Plastic surge! Grant me new life! Fallen leaves. Adorn my night. The wind knows me. Lolene! East Papa! Get him! Teamwork is dreamwork! World This stronghold is neutralized. Good work, everyone. Huh! The Abyss Order's all bark and no bite. To be honest, this was anticlimactic. I was hoping for a personal apology at the very least.
And ideally, a whole speech acknowledging the superior might of the Masters of the Night Wind. Well, whatever. I'll just have to make up for it with some extra wine at the victory feast. With the stronghold cleared, this area should be safe for the time being. But still, something tells me we can't afford to let our guard down yet. Maybe it's just me, but an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. The fighting gets more and more intense right till the bitter end. But this time was different. With a few exceptions, most of the enemies here gave up and fled the moment that... well, I don't know, but it seemed like they sensed something. Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. It's just a different strategy. I'm not convinced. Don't forget, they're radicals who chose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. It seems out of character to cut their losses and run like that. So you're saying there's more to this than meets the eye? I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert and keep our defenses at the ready. Paimon had a hunch you might say that. But you're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we can end this war before things get serious. And maybe you can finally get some answers. Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory feast. Go ahead, you two. See, Lolly and I will take care of things here. कहाँ पे लेके जा रहा है अब ये? Let's ride! Rev the engines! Bring it! And we're back where we started. That Hilichurl probably found the key nearby, right? Let's look around for clues. There's no time to waste. The Ansan and Lolly are waiting for us. Ugh! We've scoured the entire area, but still nothing. How the heck did the key end up in that Hilichurl's hands? Are we supposed to believe that it just fell out of your sister's pocket as she passed by? Seems kind of ludicrous to lose something so important in such a dumb way. But then again, who knows? Sometimes in life, things just go missing and that's that. Oh, thank goodness! Someone's here. Please help me. अबे मुझे एक टाइम के लिए लगा कि आया का है. Who are you? What happened? No, now isn't the time. Please, you've got to help me. I'm being chased by monsters and I can't keep running. Can you do something? Yeah, where are they? Paimon doesn't see any monsters behind you. Huh? I'm sorry, I don't quite understand. They're almost here. This really isn't the time to be joking around. We're not. We're completely serious. We don't see any monsters. But how? Ugh, there's no time. They're coming. We gotta run. What's wrong with that girl? She must be seeing things. Oh no! It looks like something really hit her. Maybe she was right. Quick, let's see if she's okay.
Are you hurt? What was that? The monsters! They're right there! You need to get out of here, it's too dangerous! Huh? Oh, now you finally see them. Well, it's about time. I nearly kicked the bucket just now. Great! Thank you, Savior! Savior? Burn it down! One with nature. You done? Paimon still can't see anything, so she can't tell. It just looked like you were slicing at thin air. Kinda funny, actually. Oh, really? Sure. It's nothing. It's okay. I can see they're all gone now. No need for you to check. I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but now that I've calmed down, holding hands with you like this, I'm just a little shy, that's all. Huh? Have you never shaken hands with someone before? You sure get flustered easily. Lovey-dovey. Well, anyway, I haven't had the chance to introduce myself yet. I'm Deirdith. Thanks for, saving me just now. I'm really grateful for your help. No worries. Paimon's Paimon, and this is the Traveler. With him around, you'll be safe from any monsters. As long as they're visible. So, what was the deal with those monsters just now, anyway? Your guess is as good as mine. I could see them the whole time, so when you said you couldn't, I thought you were making fun of me. Whoa! That must have been scary. The idea that we'd stand by and laugh while some poor girl was being hunted down by monsters? Don't worry, we aren't like that. When we say we can't see something, it's because we really can't see it. But more importantly, did the monsters hurt you? How bad is it? It's nothing serious. But I did sprain my ankle back there. I won't be doing any more running for a while. Good idea. We'll take you. Thank you so much. Despite getting injured, I still feel much safer with you around. I'm gonna stay here until I heal up. Don't want to risk running into any more monsters. Yeah, you already took a big enough risk coming out here all in... A small village, far away from here. I walked for what seemed like forever and lost my way, so... Yeah, I have no idea where I am anymore. Maybe all these trials and tribulations are part of the journey. No one said finding the Savior is gonna be easy. Huh. That's the second time you called the Traveler a savior. What's all that about? Oh, sorry. It just slipped out. I was caught off guard. The resemblance is so uncanny. Anyway, let me start from the beginning. There was once a sage who passed through my village. People got the sense that she was truly omniscient. The sage said that doomsday was coming. But as that day approached, a savior would reveal themselves to us. The day of disaster is almost upon us, so my grandmother begged me to leave the village and find the savior before it's too late. Doomsday? I've heard people talk about the savior since I was a kid. Growing up, it really made an impression on me.
The description is practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, it was like this image that's existed in my mind's eye all these years. अबे Suddenly गोल्डन came to किधर पे है life. ये वो? Everything matched. Oh, so that's why you were lost for words when you first saw him. Well, the Traveler's definitely got what it takes to be a savior. And he's already got a ton of titles, so he won't mind one extra. Actually, I don't think it's him. What? But didn't you say that everything matched? Everything except the gender. The savior was described as a young woman. Oh, for goodness sake. There are gender requirements to be a savior? Really? Oh, of course. If it's not you, then it's gotta be her. Who? Who is it? You have a sister? Well, then that's it. Oh, it's her. It has to be. Oh, thank goodness. Please, can you take me to see her? Huh. Maybe, if you're lucky. It just depends if we can find her. Huh? But isn't she your sister? Sorry. Looks like Paimon steered this conversation back to the fallout between you two. It wasn't on purpose, but that's the reality, so it's hard to avoid. Okay, fair enough. But since you're looking for her anyway, why don't we team up? We might stand a better chance if we work together. Have you always believed that Doomsday will come? Yes. Everyone says that the disaster is inevitable. But the Savior will rescue us all from our pain and suffering. I've always dreamed of meeting the Savior. Do you really buy this whole doomsday thing? Seems kind of far-fetched. See? She broke eye contact. Sure sign of a guilty conscience. Time to press her for answers. What's wrong, Deirdis? Something's clearly bothering you. You want to tell us what's going through your mind? Oh, I just... How should I put it? The Traveler looks just like the Savior of my dreams. And it's not every day that the Savior of your dreams swoops in and saves the day in your moment of crisis. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 3 seconds of unbroken eye contact is the limit. I don't think my mind and body can handle any more than that. What do you mean, limit? What happens after 3 seconds? I'm sorry. Please forget that I said anything. Let's just leave it there for now. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the Savior in the meantime, please come and let me know. Thank you. Are you sure you'll be okay here on your own? Do you have enough to eat? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, I'm sure I'll find something around here. Don't worry about that. All right then. Well, take care. Being on your own isn't easy. What a mysterious girl. We should definitely keep an eye on her. But hey, at least she seems to like you. And it sounds like she's gonna help look for your sister when she's healed. Anyway, this is probably all the progress we're gonna make for now. Let's head back to the Masters of the Night Wind and see if they need our help.
you're back. How did it go? Find anything? Nothing substantial, unfortunately. But we had the weirdest experience. So I take it that the war's still on? That's okay. I just wasn't sure, because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you wonder what the Abyss Order's thinking. I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna go see them myself, but I'm sure they'd appreciate a visit from the greatest hero of our time. Oh, but you're a great hero too, Yan-san. Great. Thanks, you two. Wow, Tumaini, our hero. We've actually fought together before. You probably don't remember it, though. You do? Then it's truly an honor to serve alongside you once more. Thank you for standing guard this whole time. It's all good. Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Have you seen anything out of the... Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile, just hanging around. There were even moments when they seemed to be meditating. At least, that's what it looked like to me. Maybe it's part of their religion or something. Out of an abundance of caution, I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was anything nefarious at work. But they didn't sense anything untoward, so we just put it down to religious ceremony and left them to it. Huh. Interesting. Well, the more time they spend meditating, the less time they spend trying to beat us to a pulp. Well, the shamans didn't raise any concerns, so how bad could it be? As far as I'm concerned, so long as they don't pose an active threat, they can do all the cult worship activities they want. Besides, as soon as everything's in place and we're ready for an all-out offensive, there'll be no match for us. Huh. Sounds like morale is pretty high. Guess there's strength and confidence in numbers. Let's keep going, Traveler. Huh? Is that Tumaini? What brings you here? Is this, like, a meet and greet? I wasn't... I'm so nervous. Hey, come on! You'd march to war without so much as blinking. What's so scary about a chat with a Traveler, huh? It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war. But a one-on-one chat with our great hero? That could be a once-in-a-lifetime opportunity. अबे यार ये हीरो How can पंथी I क्या not करना be बनता है? nervous? What if I say something wrong? Or if my posture's bad? Or if I accidentally make a weird expression with my face? One bad impression can stick for life. No one's here to judge you on your posture or your facial expressions. Relax! All right then. I'm sorry, great hero, but I have a small favor to ask. Let Paimon guess. An autograph. May I challenge you to a fight? What? How can you be so audacious and so sheepish at the same time? Huh. Paimon's starting to think your nervousness is all just an act. No, of course not. I just figured that if I don't ask now, I'll regret it for the rest of my life. But I am still on patrol, so please, great Paimon, if you wouldn't mind taking over for me for just a few minutes? Ugh, again with the sheepish audacity. Just pick one or the other, will you? Woohoo!
Obviously, I never expected to win, but until now, I didn't appreciate just how great the gulf was between us. अबे यार ये गलत बात है, मुझे फाइट करना था। I'll be bragging about the day I got to spar with Tumaini for the rest of my life. Today's really my lucky day. Oh, Paimon can't keep up with you. Your tone has changed all over again. Now you've had a spar with the Traveler. What gives? Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by sparring. And now that I've had a bout with the hero, we're no longer strangers. Nothing to be nervous about anymore. Okay. Well, to each their own. But Paimon's still gonna stick to conversation. Not at all. We haven't spotted any new enemy movements. As Paimon expected, nothing here either. Let's do another lap and get back to Yan-san. You're back. So, did the guards find anything? Nothing much, no. Someone mentioned that the Abyss Order has been doing some kind of meditation or prayer, but apparently it seemed harmless. Paimon wants to lodge a complaint about one of the guards, though. His name's Kentalo. Traveler? You're back already? No one thought to wake me up, huh? In fairness, you look pretty hungover. Can't imagine anyone wanting to wake you up in that state. I'll have you know I'm perfectly sober when I'm hungover. Okay. I'll admit that sounds strange at face value, but regardless, what I meant to say is, I heard something about the Abyss Order engaging in meditation. Yeah, that's right. Does that mean anything to you, Siglali? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still, it's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. Oh, so even someone as familiar with the ley lines as you can't tell what's going on. No wonder the shamans that Satura called to the front lines couldn't sense anything. Hello, आवाज आ रहा है? Ian-san, I think we should go talk to the chiefs. कैसा लग रहा है? There's no point अभी dragging मैं this कुछ नहीं out. बोल We need सकता, to अभी take भी the बस initiative and स्टार्टिंग का drive है। the Abyss Order out of Natlan for good. ऐसे ही। If that's अभी what ये happens, स्टार्टिंग में we'll कुछ sleep. उतना कुछ I'm sure the खास chiefs नहीं will है। agree, but it will still take us some time to gather the अरे required force. इंटरेस्टिंग कम होगा जब तुम्हारा In war, डेंसली बाहर आएगा, जब adequate फाइट planning शुरू and होगा ना, preparation तब is तो the तुम्हारा key to बहुत victory. अच्छा लगेगा। Sure, मुझे भी ऐसा ही but लगा the था। finer details aren't my मतलब हाँ, कॉल है इसलिए ना मैं जब कुछ Anyway, I'll leave you to it. Just remember to अभी come बोल नहीं find me when सकता you're जब ready तक to talk to डेंसली the नहीं मिल chiefs. जाता। मिलेगा मिलेगा। जब यानसान Oh? फिर से जब होगा Sure, तब what is it? Have you ever heard of a monster? Huh, you mean only select और individuals ये can see एमपीसी को them? दिया है, दिखाया है, एमपीसी Now दिखाया that's आपको a अंदर? strange one. I guess they could be manifestations of a सिसलाली disturbed तो गुस्सा हो psyche गई थी यार। or extreme negativity embodied in physical form. It could also be a simple case मैं of क्या बोल dead रहा? monsters whose souls got stuck आपका here 100 somehow. 100% है ना ये Well, वाला? I say 50-50. simple. Things quickly get confusing Oh, when you start तो looking into ये monster कितने का है? souls. For स्क्रीन है starters, रो हार्ड trying to चुके हो figure या out which इसके बाद ये वाला classification शायद system to कैप्चर use is रेडियंस a मिलेगा real आपको? pain in the पता नहीं कैप्चर रेडियंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Granny Eatsley's मैं learning उस and पर wisdom knows no कभी bounds. तो ध्यान नहीं But देता। could we just get the short answer?
ना वो Hey, मिलेगा I was just 100%। thinking out जब आप loud. 3 बार You सीधा really think I हारते was हो just तब trying to 100% flaunt my होता है। knowledge? सेकंड पे तुम्हारा 50% चांसेस होता है, थर्ड पे Anyway, तुम्हारा पूरा the एकदम short answer is 100% चांसेस होता है। there are कल मैंने many देखा, potential explanations for मतलब the kind of phenomenon you जो described. तुम्हें मतलब मिला पूरा कि नहीं मिला 5% That बताओ? है। said, it's not something I've ever मेरा तो encountered 100% in था all my गारंटी, तो years. मिला हाँ तो था अच्छी ना, बात 67 50 पे मिला मुझे। Okay. है। मुझे मिला तो Well, मिला, नहीं if मिला तो Granny नहीं मिला। Eatsley's never seen it, it might as well not exist, right? अरे, मिलेगा I'm not मिलेगा that जरूर मिलेगा। old. 18 दिन का बैनर है, अभी तक मिल जाएगा। मैंने बिल्ड Care भी to किया है। elaborate on मैंने what देखो यार, happened? उसका जो This all आर्टिफैक्ट है, sounds मतलब नया जो rather डोमेन है mysterious. नेटलाइन के अंदर, वोल्केनो के पास, मैंने वो वाला नहीं दिया अभी तक। मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, Really? फाउंटेन You का जो है ना, had to hold her 40% hand to see पीरियड the एक्स्ट्रा ले रहे, monsters? जो वाला आर्टिफैक्ट, That sounds a little contrived. वही है। अभी के लिए वो इसको वही That's the दे के part that रखा हूँ मैंने। bothers you? नॉर्मली अच्छा मर रहा है और Maybe the point is more that तो it requires क्या है, direct physical अभी contact, थोड़ा whether फार्म that कर be रहा हूँ, जब hand-holding or मेरा मतलब otherwise. वजन जम But रहा है, that's मैं neither वो here nor फार्म फार्म कर रहा हूँ। करना there. बंद कर दिया। What bothers me is, it sounds like she's convinced हाँ that your sibling, मैं the फार्म leader करना of the Abyss Order, is a savior. That और really कैरेक्टर makes तो me मिला दो, question उसके बाद whose फार्म कर side this लेना girl जितना is कुछ। on, and whether what she told you about her भाई background is वो actually कैरेक्टर the अच्छा truth. है, बट इसका बस ऑल Sorry है if that comes चार्ज across अटैक as एंड paranoid. बेस्ड, It's just hard चार्ज not to be अटैक suspicious of तुम्हारा everything when we're in the बॉस middle of a बेस्ड है। war. Actually, और इसका Paimon प्लेस feels like टाइम you make a टीम fair भी अलग point. अलग चाहिए। टीम बस क्रायो ले Whoever this सकते हो, girl 2 is, हाइड्रो ले सकते हो। she sounds like bad news. या तो एक Okay, क्रायो लो, well, एक you're हाइड्रो ले लो, clearly just jumping to conclusions. मतलब 2 हाइड्रो 3 It's हाइड्रो ले hard to know what to make of it. A पूरा young ही बेस्ट। lady all by और इसलिए herself, ना lost in the middle of काफियर nowhere, को इसलिए उन sees लोगों ने monsters बोला था that कि no one else can, तुम्हारा क्या calls the सर के leader साथ of the बहुत ज्यादा Abyss अच्छा Order होगा। her savior. At the very least, we should मतलब remain vigilant. Keep a टीम close watch on her. Sounds sensible. On that note, we probably shouldn't have left her by मिला herself क्या in मिला, that दिन cave. से मिला। Traveler, we still need some time Huh? to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. अभी तक Just be डेंसलेस नहीं careful. मिला। क्वेस्ट कर रहा हूँ। might as well since to touch. It's settled then. Let's go check on her. क्वेस्ट अच्छा है वाला, वो सबमिट भी है बट अच्छा भी है। लास्ट पार्ट में जो करने दो, सीन पता कस्टम चल आया वो जाएगा। अरे ट्रम्प ने किया है क्या, उससे पूछो। और मीड बोल रहा है हरामी भाई का। किया होगा उसने। वो इधर नहीं है। सनी कहाँ पे है? सनी आया सनी था, कहाँ चला पे गया है? वो। ऐसे उसका एग्जाम वगैरह है। हाँ मैं तो घर पे सर्टिफिकेट फॉर्म देने के लिए रेडी हूँ। इसका अरे नया इवेंट जो आया है तो भी करना पड़ेगा। इस वाला सुमेरु का इवेंट है ना ये वाला? पता नहीं मुझे, Here we are. मैंने इवेंट पे हाथ भी नहीं We'll लगाया। still be here, right? Oh, it's so वाला quiet इवेंट though. चालू कर देता। Uh-oh. What if Yansan was right? Maybe she never intended to stay 40 here at all. ये वाला स्पाइल भी किया है अपने अभी तक? नहीं। तो इन लोगों ने क्या क्या बताया यार सुन भाई। फर्स्ट पे 12-1 पे जो एक बॉस दिया ना उन्होंने, बहुत अनोइंग बॉस है, मजाक नहीं कर रहा। Traveler, watch out! बहुत ज्यादा अनोइंग बॉस है। तो उसका मतलब क्या है, उसको मारने के लिए उसका क्रायो शील्ड पे ऐसे भागना है, मतलब तो तोड़ना पड़ता है। Oh, और वो sorry. भाई वो भी 5 Sorry. रुपए मतलब I didn't know it was 5 you. बार शील्ड I तोड़ना heard a पड़ता है उसका। noise and I thought it was the. Did I hurt you? Oh, I'm so मतलब मैंने छोड़ sorry. दिया, नहीं किया I wasn't thinking straight. भाई। 5 बार एक क्या शील्ड फोड़ने के लिए तो कम से कम हम That लोग was को बहुत ज्यादा scary. टाइम लग जाएगा। Paimon thought we'd walk into a trap. हाँ देखना पड़ेगा अगर We मैं shouldn't 12 have करूँगा sneaked तो। in without announcing it. Then you would have known we 12-1 weren't पे जो monsters. बॉस देख लेना हो। To be honest, I've been really on edge since you left. I just have this constant feeling that any second, the ये वाला monsters are gonna come सुमेरु back के and ऊपर get me. बेस्ड है, तो And इसके it's बाद not like I ये can पे run जाएगा from ना, them. There's ये also नेटलाइन no पे way to आएगा cook ना here. ये वाला It's फेस्टिवल good you इसके got बाद back when वाला। you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. Oh, that's weirdly precise. तो वेपन पुल It करने does की सोच explain रहे why हो your क्या? attack on the कैरेक्टर traveler was अगर so मिल गया weak. कैरेक्टर तो
अरे Wait, कैरेक्टर मिलना तो if दो you दे, उसके really बाद thought you were देखूंगा। gonna starve or get killed by monsters, बोला why'd you ना promise that डेंशिन you'd be में किसी okay भी here on your कैरेक्टर के लिए own? कुछ को उतना कुछ I, इंटरेस्ट नहीं है। uh, I just didn't want to हाँ lose वो भी face in है। front of my hero. कुछ नया गेम है He क्या already तुम भाई saved my खेलने के life लिए? once. That's more than enough. I just don't क्या want to come गेम? वो across as वगैरह a होगा constant एक। burden. जाओ जाके जेनलेस खेलो। Huh. For someone on the तुम brink लोग of क्यों नहीं आता? starvation, you're pretty preoccupied with your image. What's the real reason? जेनलेस बोलो साला। What? बोरिंग That बोलते is तो the और real भी ज्यादा। reason. चलिए भाई Kinda bearing हाई my लेवल soul का here, you कमेंट know? चाहिए होगा, नहीं तो तुम नहीं खेलते। अब क्या ही करें, अभी हर एक गेम का वो डिमांड बढ़ गया है। Anyway, so, could you make me some food now? अरे लिटरली उसके लिए तुमको अच्छा से अच्छे डिवाइस वगैरह चाहिए और उल्टे से रिक्वायरमेंट भी चाहिए Paimon's ऐसा। getting hungry now too. अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो तुमसे Go on, man. गेम क्रैश You can करके join तुमको us बाहर for ही निकाल dinner. देगा वो। लिटरली मजाक नहीं कर रहा। वन वुमेन में आपने देखा था ना मेरा मोबाइल परफॉर्मेंस का सीपीयू जीपीयू जैसे लाल होके रखा था। Whew. सेम टू सेम मैंने I एआई से am पूछा so कि इस full. मोबाइल का ऐसे में Thanks हो for क्यों नहीं रहा। saving me. बोल रहा है आप Again, वैसे मोबाइल पे नहीं खेल सकते। starvation feels like a एआई बोल distant रहा है खुद memory से मुझे। now. Huh. You can really pack it away, Deardith. Guess that explains how you had the energy to make it this far. बोल रहा है इस मोबाइल पे तुम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। I tried so hard to hold back, but it looks like I still came across. Paimon didn't even realize how late it is. Hey, the night sky. Yeah, क्या बोलूं and इसके it's all बाद thanks to you both ज़्यादा that I'm कुछ able to relax and enjoy it. I was cooped up in that cave the whole time you were gone. Now I'm finally out. The air seems fresher, and the इस stars पे टैप टैप पे जाके more देखो, beautiful than दूसरा ever गेम अगर कोई before. अच्छा लगता है तो ट्राई करो। अगर You कोई weren't अच्छा in गेम there मिले तो that मुझे भी long. बता देना। When I was young, हाँ I used है to lie on the मतलब roof of गेम my बहुत house, ज़्यादा है। gazing up at देखो the यार एक तो stars. पबजी की तरह है, एक And वो और भी often, गेम है। my नहीं, mind कोई would drift बैटल to this रॉयल गेम question. खेलने का मूड नहीं है। Is this starry sky actually real? पब वगैरह खेलना पड़ता है, खेलना पड़ेगा। Wait, why should she think it does about this? But my grandma would tell me the answer to that question doesn't really matter. Think of all the people in our village who spend their entire lives here, she'd say. To them, that little village is their whole world. And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives, then whatever may or may not lie beyond, this is our world. And that sky is real to us. Paimon kinda gets you, but also not really. और स्टार भी Is it करते kind of बैठे like भाई क्या इवेंट है ये। how हाँ चलो journeying with the traveler is everything to पोकेमोन बैटल Paimon है या right हम now? लोग को भाई सिखवा रहे कुछ। I really treasured my मैं सीरियसली world. बताऊँ तो मैं तुम्हारे For बात a पे ज्यादा really ध्यान long नहीं दे रहा, time, मैं क्वेस्ट कर रहा हूँ the ना। village was my everything. The houses, मैंने the पहले बोला scenery, ना, मैं क्वेस्ट पे थोड़ा सा stories I always loved to hear about the savior. But I हाँ could ठीक never है bring भाई। myself कैरेक्टर to कुछ agree रहता with तो फिर मैं Grandma. स्किप कर देता। Even if the village was my entire world, I still ये had to know ये what lay बहुत outside रियल its borders. सीरियस वाला है। Yeah, go you! चलो भाई। So, I finally ventured out and set off on my journey to find the savior. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond the stars. Maybe then, I'll finally get an answer to the question I had as a child. Who knows? Maybe one day, I'll be sitting and chatting just like we are now, but with someone from another world. Yeah, one day. Oh, if only we could tell her. But it's probably best not to open that can of worms right now. I need to find the savior and protect my world. Then, I can make sure it continues to grow. That's the most worthwhile thing I can think of doing. So I've been giving it everything I've got. You know what? That's pretty cool. Paimon kinda wants to root for you now. Sorry. I got a little carried away. I always get chatty after a hearty meal. Just like my grandma. Hold
down. Shh. It's them. The monsters are back. Where? Oh, still invisible, huh? Can you see them now? Oh, Paimon still can't see anything. But please, be careful. Letting brave names echo! भाई हिंदी स्टैंड करती Light it up! Yeah, I know. Wind strike! वुल्फ फाइट कर रहे हो ना कुत्ते से फाइट कर रहा हूँ। और किधर से हैं? हाँ वो और भी एडिंग देखो मिल जाएंगे All right. Let the mountain's veins boil! Burn it down! Everybody stand back! Pyroclastic surge! Huh? ये क्या सही है Wow, that was fast. Did you get all of them? Oh, Paimon's slowly but surely getting used to the sight of you fighting thin air. You doing all right, Deirdith? Deirdith? Hey, it's okay. There's nothing to be scared of anymore. Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You spaced out? That's a pretty bold move under the circumstances. I was just... the image of the traveler fighting to protect me. I was अबे trying ज्यादा to commit it लपी-डपी to मत memory. बन यार। Seems like the least I can do. All right. Whatever क्या floats your boat. Anyway, there are no more monsters in the area, and it's getting late. Why don't you stay here tonight? Sounds reasonable to Paimon. What do you think, All right. Deirdith will be... Huh? Deirdith? Why are you going in alone? Doomsday, a fitting name indeed. A blood-red sky, wild beasts that slaughter all in sight, endless pain, a terrible curse that cannot be reversed, and the birth of a savior. यार नाइट किंगडम का म्यूजिक बहुत अच्छा है। वो तो है
जाके के बहुत अच्छे हैं। You're awake. I'm sorry. I didn't mean to. भाई कैंडी क्रश की तरह क्यों कर दिया इन लोगों ने? You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it soothing. At least, that's what my family always did when I had nightmares. But it didn't seem to work on you. In fact, I think I made it even worse. I'm so sorry. Oh, is that right? You better not be trying to pull a fast one on the Traveler. What? Don't be so... I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it? बैटरी खोल दे। पाइमन कितना कोड लेगा? No way is Paimon getting back to sleep after this. You go ahead. But for the rest of the night, Paimon is staying up to keep an eye on this young lady. Oh, do I really seem that shady to you? Yep, for me. Well, Deirdith, there should be enough food for 3 days. Make sure you eat the perishable stuff first, so nothing goes to waste. You can't tell which stuff is perishable, right? Yeah, I can tell from the ingredients. Thank you so much for making all of this for me. 3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. Then I'll continue on my journey to find the savior. All right, then we'll be off. Bye for now, Deirdith. See you? Wait! But if this is goodbye, how am I supposed to find you again? Oh, I mean, what if I find your sibling? How am I supposed to let you know? Ah, that's a good point. We share the same goal, but we're constantly on the road, so we've got no fixed address. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? Who's Mawika? It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. More like they're... running away? Where? What are you talking about? A bunch of Abyss Order thugs! You don't see them? They're heading right this way! That's strange. I guess it's my turn to not be able to see the monsters. You're right! I see them now. You weren't joking after all. So this is what it's like. What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it Deirdith? Or the monsters themselves? Or is it us? Well, might as well mow these ones down, just so they can't pose a threat to the tribe. Woohoo! All done! Their morale seems super low. Guess they really were on the run, huh? So there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Why couldn't I see them until you took my hand? So, any ideas on why those monsters might have been running away? Maybe something went down on the front line. Oh, Paimon's getting a little worried about Eon-san and the others. Let's head back to the Masters of the Night Wind right away. We gotta go. Bye for now, dear. See ya, and please take... What?
We ran into quite a big group from the Abyss Order just now. Has something happened at the front? The front line has collapsed. Huh? But how? No, relax. Their front line has collapsed, not ours. Oh, feels like you could have phrased that more कार clearly at the मूव में start. 20 पॉइंट चाहिए. This is good news, right? Why'd you still look so serious? No, we're still mustering troops, nowhere near ready to go on the offensive. So at first, I was also confused about what exactly happened out there. But just now, I got the full story from a guard who was on the scene. He watched the enemy lines crumble in real time. What did he see? One person. Just a single individual. They stormed the enemy lines and attacked with a vengeance, cutting them down like paper dolls. They wielded an unknown power and fought with a sword style that no one recognized. The guard who relayed this to me said that before he even had time to react, the enemy was decimated. I'm only recounting what I heard, and I'm sure the guard in question must be exaggerating to some extent. But still, we have to identify this person. And assuming they're a neutral party, we'll need to figure out how to engage with them. Clearly they're a force to be reckoned with, so we don't want to come across as too weak or too hostile. It's quite a diplomatic conundrum. You don't need to sweat it, Ian-san. From your description, we're already pretty confident that we know this person. Honestly, रिवॉर्ड अच्छा with दे the रहे Abyss हैं. Order acting out so publicly, it's about time he showed up. Dainsleif. Wait for Dainsleif show up. अब होगा रेडी रहो. डेंसलिप आ जाएगा तब से भाई एक को इसका मजा तो होगा. डेंसलिप को वॉइस नहीं है, ठीक है ना? Seriously? बड़ी अच्छा It's खासा been a कोई इसका while, मजा खराब Dane. कर दिया हम And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up. You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Ian-san. She insisted on coming here to thank you मजा खराब in कर दिया कि person. नहीं? Yep. अब It is my honor, Mr. Dainsleif. Thank you for breaking the stalemate in our war against the Abyss Order. Natlan is fortunate to share a common enemy with such a mighty warrior as yourself. Please don't mind him, Ian-san. He always talks like that, but he's a pretty nice guy deep down. It's quite all right. Uezo Janssen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense, and I am still delighted to make his acquaintance. Anyway, since you're old friends, I'll leave you to catch up for now. Take your time. Sure thing. You probably have plenty of other stuff to do anyway, right? Since this war isn't exactly over. See you later, Ian. Hey, Dane. Would it have killed you to be a little more polite? She's our friend. कोई नहीं है मेरे पास. Ugh, so stubborn. But whatever. So anyway, Dane, do you have any new info about the Abyss Order for us? Any idea what they're trying to achieve with this war, for example? No. We thought so too. But it sounds like you're no closer to learning what that goal is than we are.
What do you think we should do? Paimon gets it. Nothing in the world can satisfy you like making mincemeat out of the Abyss Order, right? Wow! Okay. A rare, candid response from Dane. Well, actually, we found his sister's hibernation chamber key near the Collective of Plenty. She must have lost it. Oh, and there's more! After finding the key, we also ran into this weird girl. She kept seeing monsters that we couldn't see, and then, this other time, we saw a load of monsters, but she couldn't. She also said she was on a journey to find the Savior. Her description of this Savior matched the Traveler pretty closely, so we figured it's probably his sister. Yeah, that's right. Is something the matter, Dane? Paldo, huh? Wait, wasn't his sister called the Princess, though? Where did this Savior thing come from? आदमी तो सही है. Oh, sounds like the people of Conria really believed in her. मैं थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है. Ah, Paimon gets it now. So, a bit like Kaya, except she grew up somewhere more isolated? Still, that doesn't explain the invisible monster situation. Sure,
Also, why don't you stay with us at the Masters of the Night Wind for tonight? You must be tired after all that fighting today. Oh. Is that Dane and Ian-san discussing strategy together? Huh. Looks like they're getting along just fine. Morning! What are you guys talking about? Ah, you're here. I have some good news to share with you. We just got word from the Scions of the Canopy. Their intelligence has reported that they've discovered the Abyss Order's headquarters in Natlan. After their front lines dissolved, the bulk of their forces fell back to that area. It's also where their central command is located. The location? The Cinder City. Cinder City, huh? That tracks. Seems like their kind of place. Hey, this is great! This could be our chance to crush the Abyss Order once and for all! And with any luck, maybe we'll find your sister there too. Yep, our army is almost ready, and we've sent a message to Malwika to let her know the plan. We can't really launch an operation this big without the okay from the Archon. I've already explained my reasoning, Mr. Dainsleif. I understand your concern, but an immediate strike is not on the cards for us. You're gonna go on your own? Come on, be sensible. Just wait a tiny bit longer and you'll have a whole army going with you. It's all right. I support your decision, Mr. Dainsleif. Huh? Shouldn't you be talking sense into him? I admire his courage, and I believe he is strong enough to take on the Abyss Order on his own. And even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive with reinforcements. Mr. Dainsleif, I wish you the very best of luck. Looks like he's waiting for you to say something, Traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was gonna brave it alone. And then he called his own bluff. Is this the place? The Abyss Order's hideout in Natlan?
long since we fought with Dane side by side. Paimon's confident we can clear this place out long before Eon-san arrives. And if you get to meet your sister again, even better. Let's go! In this battle, Drenslap will show you the might of the Twilight Sword summon him to clear the exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Seriously? Rise with the sun! Clouds high, the birds call! Letting praise names echo! Light it up! Follow the wind. Let's ride! Try and stop me! As one with wind and cloud! Hear the echoes of the valley! Rise with the sun! Clouds high, the birds call! Ugh, how annoying! Bring it! This is a very different battle from the one we fought with Eon-san. No one's backing down. They're fighting back with everything they have. Behold! The Light it up! abyss has become you! Letting praise names echo! Light of the
the blazing sun! Burn it down! The truth shall set you free. I'm going in! Hear ye Wind strike! joy. Great is opened unto you. Time to go. Light it up! Into the wind. As one with wind and cloud. Stay focused. Let the mountain flames boil! Rise with the sun. Burn it down! One with nature. It's fine. So many regrets. Dainsmith, the relentless spectre that haunts us. The abyss is all present. To flee is futile. To resist it, vain. Fallen leaves, adorn my night! Into the wind. Wrath from the sky! I see dominion! Incinerate! Everybody stand back! The wind knows me. Time to go. Clouds high. The birds call. The abyss shall rise once again. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Let's ride! Rev the engines! Twilight Sword Dainsmith. Is this really what you want? So, where's the Traveler's sister then? Or is this guy supposed to be in charge here? So, this is a hunt to you. I must say I pity you, Dainsmith.
The death you dole out so readily to others is a luxury you yourself cannot enjoy. But today, that is the least of your worries. Do you realize that all your years of pursuing us are being rendered utterly meaningless, even as we speak? Then allow me to be frank. As far as we are concerned, our princess has already won by other means. And I do not merely mean this battle. No. Her Highness has achieved something far greater. For today, the Abyss Order's greatest wish has finally been fulfilled. Our Highness quietly infiltrated the Night Kingdom to exploit that realm's past experience with ley line reconstruction. And then used the Loom of Fate to reweave the ley lines of Conria. What? She used the Loom of Fate? Wait, does this mean the attack on the Masters of the Night Wind was all a smokescreen to give her some cover? Oh no! This makes too much sense. Correct. As of now, our homeland has been revived. And all of my comrades that you have slain, Dainsleif, they shall forget the struggles that have beset them these past 500 years, and begin their lives anew in a Conria restored to life. Right! You still need a few steps after that, such as finding a place to host the ley lines you just re-wove. Plus, if it was really so easy, Malika and the captain would have had a way easier time during the war. Oh, you poor fools. Clinging to delusions, even after the truth has been plainly revealed to you. Think back on the past few days. Have you truly not noticed anything amiss since the start of the war? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still, it's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on.
Hear the echoes of the valley! Pyroclastic surge! Incinerate! As one with wind and cloud! You battle in vain! Bring it! The Abyss Order's mission has been fulfilled! Burn it down! Light of the blazing sun! My body is failing me. That should be all of them, right? So, we've destroyed the Abyss Order's headquarters in Natlan, but somehow, that didn't feel satisfying at all. Are you still thinking about what that guy said? You look really worried. "500 years on, and you still refuse to address me as master. Don't forget, Dainsleif. You may be the renowned Twilight Sword, while my arm has grown too feeble to swing a blade. But I taught you everything you know about wielding a blade. Be that as it may, under the circumstances, I see no further reason for us to fight. The curse of immortality means neither of us has a way to completely destroy the other. Finally had enough. You weren't joking then, huh? Never, in all my worst nightmares, have I experienced anything close to the pain of 100 deaths. Surely, there's no point taking out all your hatred on me alone. All right, I believe you. Still, aren't you at least a little tired now? Why don't we sit down, perhaps? Chat a little. What? Not a fan of reminiscing about old times? Well, I suppose you don't have many fond memories to look back on. Indeed. When the cataclysm first struck, everyone prayed for the Savior to deliver them. But she was nowhere to be found.
Yes, we knew that the great abyssal power within her had been divided up. Yet we still despaired at her choice to leave us. Still, I believe that everything she's doing now, including her regret over what happened, comes from a genuine place in her heart. And besides, who else can we place our faith in? We are proud Conrians, are we not? I mean, we can hardly turn to the gods. Is that so? Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to you for those actions, truly. But the fact is, I honestly can't remember them anymore. Look at me. Look at what has become of me. Only by the Abyss's grace have I managed to maintain this physical form. But as for the rest, memories, spirit, emotions, personality, they have long become eroded, fragmented beyond recognition. Even if mine was a past steeped in sin or in shame I once longed to hide, I would wish to remember it. Without my history, I fear I will become another person entirely. I would like to apologize for any misdeeds that are mine. So please, tell me everything. Tell me about the Conria we once called home. You seem to remember much. Could you tell me more about it? About our golden age? Is that so? What a pity. But this will be quite sufficient, as long as the loom of fate heard what I could not. I'm afraid I owe you yet another apology, Dainsleif. You were right. I lied to you earlier. Your wits are too sharp to be fooled by me. The homeland hasn't yet been revived. In fact, even the ley line weaving is not yet complete. Think of ley lines as the collection of memories concerning a given place. To reweave Conria's ley lines as they were 500 years ago
we would somehow need to retrieve almost all the memories of Conria from that age. The loom of fate cannot weave without an abundant supply of memories. And so, we relied on everyone in the Abyss Order to provide what they could. Even though fragments are all that remain in most cases, the more we all share, the more that can be restored. Indeed, we, a people in exile, stranded 500 years in the future, will weave our homeland anew and bring the nation of our dreams back into the real world. Ah, what a glorious undertaking! What a shame it had to take this long. After 500 years, most of our memories have faded, and a world woven from broken memories shall itself be broken. Precisely, for you possess a ring left to you by your elder brother, which continuously resets your body's condition. Of course, your memories are susceptible to erosion just like ours. But of all Conrians who remain, you are sure to remember the most. We had to obtain the memories in your mind, whatever the price. Even if it meant sacrificing our entire army as bait. Perhaps, but that is the gamble our Highness has chosen to make. And thanks to you, the loom of fate has now finished weaving the ley lines. New Conria is complete! ओके, ये लोग डेंसलेप का मेमोरी के पीछे था। It's Judith! Great! She's still here! अरे लुमिन का भी मेमोरी नहीं है।
This is is there a way to We're not from the same world, are we? Wait, but that's great! That means the world isn't going to end. In that case, tell me, what happens to Conria? What happens to my homeland? No, wait. Don't answer that. We can only fight for our future. If the future is unknown, I still believe the Savior can turn things around. I'll carry on looking for her, even if you're not there to protect me. Although, in a way, I've already found my Savior. It's you. You protected me, and I believe you can protect us all. You're the one who can change everything. It's just too bad that we're not from the same time or place. Oh, one last thing before I forget. I know how much you want to find your sister. Surely she must be desperate to find you too. please don't give the key to her. So, is there anything you can give me as a memento? Proof that we met? Okay. That way when I do find her, I can convince her that you're also searching for her. Huh? What is it? If is this the future? Okay then. The ruler of the time master.
Our hero is back! Everyone's been waiting for you! The Abyss Order made a full retreat before our forces even arrived on the scene. All thanks to your efforts, no doubt. Oh, and Mr. Dainsliff's, of course. What's wrong? You look upset. Paimon doesn't know the details either. The traveler just disappeared after taking Deirdre's hand. It was like they got sucked into another world. Paimon was looking all over for him, and then he suddenly reappeared, right back in the same spot, but looking a lot more glum. I think I got the gist of what happened. Something to do with your sister? I spoke with the Lord of the Night in a dream just now, and learned quite a lot. यहाँ वॉइस नहीं है ना, वही दिक्कत है. Huh? You met your sister? And you didn't think to tell Paimon right away? Well, oh, never mind. Paimon can see that you're pretty down right now. But let's go over everything later, alright? What your sister accomplished? It all but defies comprehension. I was stunned when I heard about it too. But what surprised me the most was that the Lord of the Night actually chose to allow it. The Lord of the Night did try to explain it to me, but in a word, it's complicated. During the war with the Abyss, Mawika had an argument with the captain. Mawika believed that we should fight to protect our culture and memories, while the captain believed the preservation of the ley lines should come before all else. So, the Lord of the Night was very intrigued when presented with the Loom of Fate, and informed of its ability to weave ley lines. She saw your sister's actions as a potential third option, namely to preserve an entire nation in the form of an atlas. Preserve a nation? You've definitely lost me now. You're not the only one. Paimon's got no idea what's going on either. With that in mind, the Lord of the Night gave the go-ahead once she was satisfied that the Loom of Fate wouldn't have any real effect on Natlan. However, I believe she imposed an additional condition of her own. An additional condition? Did she ask for something in return? No idea. She wouldn't tell me what it was. Huh. Alright, well, let's not overthink this for now. We just won a war! Time for a well-earned drink to celebrate. I trust the Lord of the Night unreservedly. I'm sure she only involved herself to take a problem off our hands, so it's one less thing for us to worry about. Don't you agree, Traveler? Come on, let's head back to the Collective of Plenty. Oh, Veressa should be there too. We'll treat you to a real feast. Huh? Ian-san, leave him be. This might be hard to understand for an extrovert like you, but some people need alone time to recharge every once in a while. Traveler? वॉइस नहीं है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगा. वॉइस रहता तो थोड़ा सा ठीक था.
खत्म सीरियसली। अबे यार क्या भैया। हाँ थोड़ा सा वो है। अबे वेट, हाँ एक और आर कॉन्क्वेस्ट है मेरा इधर पे। Thank you for complete. Add Astra. और इधर पे जिलोनिन का भी वॉइस नहीं है। आह, The biggest one in history. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. mixing process if you don't keep your voice down. ये क्या है? The power of artifacts. हेलो कृष्णा के वेलकम द स्ट्रीम। कैसे हो भाई? एक अकाउंट रिव्यू करोगे? अकाउंट रिव्यू कर सकता हूँ। देखो अगर फ्लेक्स करना है तो फिर यूआईडी बताओ अपना। बीजा किस बॉस की बात कर रहे थे तुम? इधर पे सी हॉर्स है, लेक्टर।
12 1 पे रियली? हाँ रुको देखता हूँ। फर्स्ट है या फिर सेकंड? इधर पे मैकेनिकल एरे है, मैकेनिकल एरे इजी है ना, मैकेनिकल एरे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वन, हाँ क्रायो, वो जो क्रायो है वो, हाँ उसका, उसके पास तो शील्ड आता है, उसका शील्ड ब्रेक करना भी इजी है। हाँ भाई बोलो। हाँ 5 शील्ड। हाँ तुम्हारा यूआईडी आया ही नहीं। ये रुको, हाँ देखा। ये वाला है क्या? अर्पण भाई क्या तुम मेरे अकाउंट पे स्पाइल करोगे इसके बाद? नो मैं स्पाइडर नहीं काटने वाला। ओह सिग्नेचर है एंड C1 भी है। अरे 4 पीस वो यूज करो ना, उसका नाम क्या है, मुझे नाम वो याद नहीं, बट 4 पीस वो यूज करो, वो बेटर है। ओके एंड HP दो उसको। एंड तुम्हारा अगर तुम 4 पीस यूज नहीं कर रहे होगे ना तो फिर क्रिट रेट बहुत कम है। अगर 4 पीस वो आर्टिफैक्ट यूज करोगे तो ये क्रिट रेट तुम्हारे लिए ठीक है, तुम इससे बेटर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका वो है, सिग्नेचर है, वो जो कि 88% क्रिट डैमेज देता है लेवल 90 पे। एंड उसका नॉर्मल अटैक लेवल अप करो। ओके फीडिंग ट्वाइलाइट। हाँ 4 पीस। अभी मैं आर्टिफैक्ट का नाम भूल जाता हूँ यार, उसका नाम क्या है वो आर्टिफैक्ट का? क्या कर रही हो ये? ओके इस पे एलान पे 4 पीस एम्बलम दे दो। और थोड़ा सा और एनर्जी भी हो जाएगा तो भी चलेगा। आमे नमक आगे उच्च। ओके मैं बोलूँगा इफ आर्टिकल इज बेस्ड देन गेम बिकम्स इजी टू। ओके मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूँ। जो आर्टिफैक्ट इधर पे नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग बॉक्स पे जो आर्टिफैक्ट नहीं है उनको तुम फार्म करो, ठीक है। उनको तुम फार्म करके जो तुम्हारा बेकार आर्टिफैक्ट होगा ना उसको तुम इधर से स्ट्रॉन्ग बॉक्स से वो
कैरेक्टर के लिए आर्टिफैक्ट निकाल लो। ओके अगर 4 पीस से ये तुम यूज़ कर रहे हो ना तो इतना क्रिट रेट नहीं चाहिए उसको। ओके 40% क्रिट रेट ही इनफ है। ओके वेपन पहले लेवल 90 करो। 4 पीस नोबलेस दे दो एंड इसका बर्स्ट इसका टैलेंट जो है ना बर्स्ट वो लेवल अप करो, कैरेक्टर को लेवल अप करो। adventure team, assemble! ओके बेनेट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ कैरेक्टर लेवल अप, वेपन लेवल अप, टैलेंट इसका बर्स्ट लेवल अप। ओके उसके बाद इसका आर्टिफैक्ट पे 4 पीस तुम नोबलेस का बस 4 पीस चढ़ा दो, कुछ भी बस एनर्जी रिचार्ज सैंड दे दो। हो गया। HP अगर भर दोगे तब भी चलेगा। 120% भी अच्छा है। 50% ओके सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट। अरे कोई तो 4 पीस यूज कर लो ना, किसी एक कैरेक्टर पे फोकस करो। ओके और नाहिडा को DPS बिल्ड करने का जरूरत नहीं है, एलिमेंट्री मास्टरी भर दो। अगर तुम्हारे पास नाइडा का C2 रहता तो फिर मैं बोलता कि हाँ उसको DPS देखो, तुम उसका DPS बना भी सकते हो, सब DPS इतना भी वो नहीं है। पहले तुम 4 पीस आर्टिफैक्ट पे फोकस करो, उसके बाद जाके दूसरे उस पे तुम DPS पे फोकस करो। एंड व्हाट इज दिस? तुम जंगली का शील्ड यूज करते हो या फिर क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर एक पे तुम क्रिट डैमेज DPS पे जा रहे हो। 4 पीस टेनासिटी दे दो इसको, और अगर तुम्हें शील्ड यूज करना है तो फिर फुल HP जाओ। एंड इधर पे एक 3 स्टार वेपन है वो HP वाला, आई थिंक मैं वेपन का नाम भी भूल गया, इतना टाइम से मैं गेम नहीं खेला। वो वाला वेपन यूज़ करो HP वाला 3 स्टार वाला। और अगर तुम्हें सब DPS चाहिए तो फिर टेनासिटी के साथ 4 पीस तुम क्रिएटेड वो कर सकते हो एनर्जी रिचार्ज वेपन के साथ। एंड राइडन को कैच दे दो, ठीक है R5 कैच। तुम्हें फिशिंग करना पड़ेगा बट, और 4 पीस एम्बलम दे दो। ओके मैं राइडन का एक टिप देता हूँ, उसका जो स्किल है ना वो उसका क्राउन मुकाबी मत करना, 9 तक रहने दो। अगर तुम उसका अल्टीमेट क्राउन करना चाहते हो तो कर लो, नॉर्मल अटैक बेकार है। पता है क्या है ये? क्या चीज करो और फोकस करो, 4 पीस एम्बलम दो। ओके फुरीना पे फाउंटेन पे एक फिशिंग करके तुम्हें एक पाइप मिलेगा वेपन एनर्जी रिचार्ज के साथ, वो वाला यूज़ करो। फुरीना अटैक पे काम नहीं करता, फुरीना HP पे काम करता है। ओके एंड 4 पीस उस पे वो दे दो आर्टिफैक्ट जो इधर पे फाउंटेन में है, जिसका तुम उधर पे इसको चाहिए, नेबुलेट को चाहिए, उसका बर्स्ट लेवल अप करो पहले। ओके इसके लिए अगर तुम्हारे पास कोई क्रिएट वाला वेपन नहीं है ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ब्लैक क्लिप नहीं है तो फिर 3 स्टार वाला एक वेपन है जो कि क्रिट रेट देता है, वो वाला यूज़ करो, उससे तुम्हारा नॉर्मल अटैक डैमेज इंक्रीज होता है। एंड उसका नॉर्मल अटैक लेवल अप करो पहले। हाँ, तुम्हें हर एक के लिए तुम्हें आर्टिफैक्ट फार्म करना पड़ता है। अच्छा ओके मैं तुम्हें एक सिंपल सा टिप देता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर लेवल अप एंड उनका टैलेंट लेवल अप एंड वेपन लेवल अप, ये 3 चीज़ों पे फोकस करो, आर्टिफैक्ट बाद में फोकस करना। स्ट्रिंगलेस ठीक है। 4 पीस BB सेट दे दो इसको एलिमेंट्री मास्टरी के साथ, एंड उसका बर्स्ट लेवल अप कर लो।
ज्ञानी डीपीएस है, ठीक है, सब डीपीएस नहीं। तो इस पे तुम अटैक वाला वो यूज करो। तुम्हारे पास इतना सारा कैरेक्टर है, तुम क्या कर रहे हो? महावी का कोई एनर्जी रिचार्ज चाहिए नहीं होता है, महावी का एनर्जी रिचार्ज पे काम नहीं करता। दूसरा कोई भी वेपन दे दो, हुआ तो एलिमेंट्री मास्टरी के साथ भी दे दो, फिर भी वो एनर्जी रिचार्ज मारता हो। उसको नेटलैंड का नाइट सोल पॉइंट चाहिए होता है उसका बर्स्ट के लिए। हाँ, बहुत कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे अकाउंट के लिए, बहुत कुछ, आई मीन बहुत कुछ। सबसे पहले ब्रेनेट का वेपन एंड उसका बर्स्ट वो लेवल अप करो, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर पे फोकस करो। सबसे पहले कैरेक्टर लेवल अप, वेपन लेवल अप एंड उनका टैलेंट लेवल अप, इन 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। उसके बाद जाके उनके आर्टिफैक्ट पे, क्योंकि आर्टिफैक्ट ग्राइंड वही है एंड गेम की, ग्राइंड करो बस, आर्टिफैक्ट काम करते रहो जिंदगी भर। अरे विजय, पूरा इवेंट आ गया है क्या? तुम्हारा क्या रिव्यू करूँ, तुम्हें पता है गेम कैसे खेलना है, कैसे कैरेक्टर बिल्ड करना है। देखो, जिनको पता है उनका रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है, बट बोल रहे हो तो देख ही लेता। हाँ, किसको देखूं? या हाँ, तुम ये वाला वेपन भी यूज कर सकते हो, ठीक है कृष्णा भाई। ये वाला नेटलैंड का क्राफ्टेबल वेपन है, इस पे माविका पे एंड 4 पीस से ऑब्सिडियन कोडेक्स यूज कर लो। नहीं, एक्सपायरल नहीं करने वाला। मैं थोड़ा सा मैं जेनलेस पे जाने का। हेलो बीस्ट यार, वेलकम टू स्ट्रीम, कैसे हो? अरे विजय, इसका स्किल भी लेवल अप कर लो ना। क्योंकि इसका पता है, इसका बर्स्ट, आई नो कि इसका बर्स्ट बहुत डैमेज करती है, बट इसका जो मेन डैमेज सोर्स है ना, वो तुम्हारा स्किल है। C1 चलोटा और C3 रोजारिया और C5 चोंग्यून, वो स्पीड बेस्ट फॉर स्कार्क। मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे स्कार्क का उतना ठीक से पता नहीं, बट मुझे इतना सा थोड़ा सा बस पता है कि मतलब स्कार्क जो तुम्हारा है वो इस पे फ्रीज पे काम करती है ना। अगर फ्रीज पे काम करती है तो फिर मैं इधर पे रोजारिया प्रेफर करूँगा, क्योंकि रोजारिया का जो है ना, वो तुम्हें क्रिएट ट्रेड भी प्रोवाइड करती है। एक मिनट, मैं भूल गया, शायद से क्रिएट ट्रेड प्रोवाइड करता होगा। एंड उसके बाद तुम उसको थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज वगैरह देके भी, वो मतलब तुम्हारा एनर्जी भी इशू भी, जो एनर्जी रिचार्ज का अगर इशू रहेगा ना, तो उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम उसका सॉल्व करता है। रोजारिया तो कहाँ पे गया? चला, ओके। वन रोजारिया डील्स क्रिएट हिट, हर अटैक स्पीड इंक्रीज। ये उतना कुछ खास नहीं। C3 बोल रहे थे ना तुम? या मैं बोलूँगा रोजारिया यूज़ कर लो, क्योंकि उसका C2 पे उसका ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाता है,
तो एक तुम्हें वो मिल जाएगा, ये मतलब एक सब डीपीएस कैरेक्टर मिल जाएगा। हाँ, उसका C6 तुम्हारा फिजिकल रेजिस्टेंस है, वो काम करती है। ओके, इधर पे वो क्रिएट रेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो कि अच्छा है। एल एलान और वाटर बॉय एंड दो क्रायो कैरेक्टर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, रोजारिया तुम यूज कर सकते हो क्योंकि ये इधर पे तुम्हें क्रिएट रेट भी देता है। जब उसका बर्स्ट यूज करोगे ना, इंक्रीज क्रिएट रेट ऑल नियर बाई पार्टी मेंबर एक्सेप्ट रोजारिया हरसेल्फ बाय 15%। अब रोजारिया क्रिएट रेट 10 सेकंड क्रिएट रेट बोनस गेन दिस वे कैन नॉट बी एक्सेप्ट बाय 15%, ब्ला ब्ला ब्ला। Wait a second. Wait. मैंने अभी एक चीज नोटिस किया, तभी मैं बोल रहा था कि उधर पे मेरा डैमेज क्यों नहीं आ रहा था, पता है विजय? जब मैं वो कर रहा था, क्या कहते हैं, मैं एक वो पोस्ट कर रहा था, इसका वेपन देखो। मैंने रोजारी को दे दिया था ये वाला। सीरियसली। अरे पता नहीं क्या क्या था वो। Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Okay, एक सेकेंड। Hello. नहीं ना, मुझे स्पाइरल नहीं करना है अभी। अबे यार सीरियसली। ये स्पाइरल करके क्या करूंगा मैं, बताओ? कोई फायदा है स्पाइरल करने से? बेकार में टाइम वेस्ट है मेरा वो। हाँ, होंकाई का लास्ट स्ट्रीम था। हाँ, रेर ने मुझे बोला था कि आज होंकाई का लास्ट स्ट्रीम था। हाँ, मुझे उसका कोड रिडीम करना पड़ेगा। हाँ, मैं बाद में कर लूँगा उसका कोड रिडीम।
फिर मुझे इधर पे कैरेक्टर थोड़ा सा बिल्ड करना है। इतने सारे मटेरियल चाहिए। अबे क्या प्रॉब्लम हो रही है यार इसका। एक मिनट। This is the path I follow. Ooh, we really harmonize. Ready and waiting. Is the concert starting? To what do I owe the pleasure? अरे हाँ, मुझे इसका वो Good कोड day, डेवलप करना Popsy. पड़ेगा। Ooh, we really harmonize. Ready and waiting. Is the concert starting? ओके, मुझे उल्टी वॉश करना पड़ेगा। डांस शोज। यप, मैं इस बार इसे जब फर्स्ट टाइम आया था ना तो उस टाइम पे मुझे नहीं मिला था, तो इस बार मैंने पुल कर लिया इसका। सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। अबे ये तो वो है, मुझे इस पे हंट पे जाना है। This is the path I follow. Is the concert starting? यही वाला है ना, या डांस शो। हाँ, वीकनेस आइस एंड ईथर। या मैं आइस एंड ईथर यूज करने वाला हूँ। अरे इस पे इतने सारे मटेरियल मुझे चाहिए है ना। अभी मेरे सपोर्ट कैरेक्टर के लिए अभी मेरे पास वो नहीं है, वेपन ही नहीं है, मतलब डब्ल्यू इंजन जो रहता है इनका। लैग क्यों कर दी है? अबे लैग क्यों कर रहा है इतना? अबे इतना लैग हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊं। Don't get hit. Help is here.
अबे इतना लैग कर रही है ना, मैं वो भी नहीं कर सकता. My blade is already sheathed. Dokadu is here! Yeah! It's no good surrendering! Swift and decisive! Blow, blow, blow away your troubles! Yeah! Neat and tidy! Swift and decisive! अरे मुझे क्या विवियन मिला, बट बिल्ड नहीं किया. यहाँ लैग तो कर रहा है, अब क्या ही बताऊं. एक ही मिल रहा है पता है. ये ऊपर से इतने सारे मटेरियल चाहिए यार उसको. एक बार वीकली बॉस करो तो सिर्फ एक ही वो मटेरियल मिल रहा है वीकली बॉस का. क्या मजाक है. इधर पे 3 चाहिए लगता है. टोटल 7 चाहिए. देख लो. Asset confirmed. Preparing to move out. ये भी है तुम्हारे पास. नहीं, मैंने उस पर पुल नहीं किया. नया कैरेक्टर की अगर बात करोगे तो नहीं, मैंने उस पर पुल नहीं किया. I'll protect you from any danger. Headmaid Rena, at your service. Good day, Proxy. Eradicate all evil. Asset confirmed. Preparing to move out. This is the path I follow. To what do I owe the pleasure? Eradicate all evil. Wata wata. Wata wata. Okay, good night. Headmaid Rena, at your service.
Don't just think about it. Do it. यार फोन इतना गर्म होता है ना इस पे। Let my song move everyone. I'll join your melody. अबे रुक जा। Eyes on me. इसका स्किल का क्या मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। It's dangerous. Please stay behind me. The best defense. मुझे एस्ट्रेया का प्ले स्टाइल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। Leave this with me. Who will see? Nothing breaches my defense. Catch this one. Let me rock your soul. Let our souls resonate. Full lockdown complete. Strike zone. Check it while they're down. There's no time to lose. My blade is already sheathed. My turn now. Look at me. Tough luck. Around and around and stop.
I'll join your melody. Catch the rhythm. Move it! Out of my way! I'll cover you. Guess what? Nothing slips through my defenses. Out of my way! Home run! Catch the rhythm. Let our souls resonate. Don't cross the line. Heads up. The best defense is a strong offense. I'll take points. My blade is already sheathed. I'm here. Look at me, tough luck. Gotcha. There's no time to lose. Weakling. I swear on my blade.
blade is already sheathed. Silkaku can help. Just don't blink. Right back at ya. Catch you in the next life! This is the path I follow. Is it work time? Ooh, we really harmonize.
weakling. Silkaku can help! Yeah! Time to eat! Now's our chance! Gotcha! Vanish! Blade is already sheathed. Silkaku is here! Yeah! It's no good surrendering! There's no time to lose. Silkaku through! Tough luck! You're done. It's over. Eradicate all evil.
Right.
Tonight's challenge has arrived. Thanks for watching. Let the show begin. And the tempest! Wind rises! Crumble. Shadows must be purged. Atonement. Charge for furious tides. Split the heavens. Purge the impure. I shall lead the way. Leave it to me. Iron graft you knew. यार कितना लैग है ये Strike at one. Oh, spells, heed my calling. Take forth. Evil be cleansed. Leave it to me. Astral nation. Loading. Diminish. Take a breath. Oh, this will be sink into the Together we fight. Take form. I shall lead the way. The sky beckons. Blessed end. Leave it to me. Stay uploading. In war with time. oh, this will be surge of deep tides.
वाओ, गेम ही क्रैश हो गया। ओके, बाय द वे, गुड नाइट।